has some words of wisdom that might just shift our perspective. He's making peace with India's performance, highlighting the power-packed T20 capabilities of the West Indies team. Gavaskar's message? There is no shame in losing to a team that's clinched 2 ICC T20 World Cups and boasts an impressive IPL track record. But don't just take my word for it. We will dissect his perspective and explore what this means for Team India as they gear up for the challenges ahead. Before we wrap up, fantasy team enthusiasts can now revolutionize their gaming experience with our Crickong app. Prepare to unlock the full potential of your team selection as our app provides a wide array of interactive features and expert predictions. Our esteemed analysts offer valuable insights and game-changing analysis, giving you a strategic advantage in the highly anticipated live matches. We emphasize the significance of considering multiple factors and making informed decisions to optimize your team's performance. Immerse yourself in the thrill of the game with our engaging live commentary and captivating podcast. We highly value your input and encourage.
Now on air with the CricCom commentary team. Hello. Have you taken your breaks? Are you refreshed? Because we certainly are, and we are ready with the again I'm making a mistake. It's not the penultimate game. It's the third last game. You can call this as a quarter final of the 2023 Lanka Premier League. Is the Eliminator between number 3 and number 4, Beloved Kandy and Jaffna Kings being played at the same ground, same pitch as well, the same pitch which hosted qualifier 1 as well. And it's number 3 versus number 4. Normally, when you say number 3 and number 4, we expect that those will be level playing teams, because that's why they're number 3 and number 4. But in reality, that is not the case, because number 3 have had a chance to finish number 2, but then they lost it in their final game. And then while number 4, we dare say, were lucky to come through the back door with a superior net run rate. But whatever has happened in the past, because their captain, Jaffna Kings captain Thisara Pereira, made it very clear. The group stages are done, and we are not here to revisit the group stages. We are here to look at what is ahead. Hello and a warm welcome to the Eliminator of the Lanka Premier League between Beloved Kandy and the Jaffna Kings. This is the pair of Karthik and Swapnil to try and take you through, to entertain you, and do some commentary as well for this particular game. And just joking, we'll be doing commentary, of course, but we'll be trying and entertaining you so that you don't get bored. And the news from out in the middle is that Thisara Pereira, who is the captain of the Jaffna Kings, won the toss and elected to chase. And interestingly, the reason that he gave was that one side of the boundary, the square boundary, is very short. It's just 57 meters. And that's the reason he has chosen to chase. It's a very weird reason which he gave, but well, it is what it is, and we have to live with it, with whatever reason that he gave. While as far as Hasaranga is concerned, Hasaranga, who is the captain of the Beloved Kandy, said that no issues. I was always looking to bat first any which ways, because their last 2 matches they lost, and both were while chasing, so they would be happy batting first. Another reason, I would say batting first is better in a knockout game. Why? Because this is a used pitch, and in the evening games in Colombo, batting second has always been difficult, more difficult, because the degree of turn is more in the night. So the stars are aligning towards Vanindu Hasaranga. But let's tell you some facts now. Only one team has won the Lanka Premier League since its inception, and that's Jaffna Kings. One in 2020, one in 2021, one in 2022, and their record in knockout matches is 1 loss out of 7. That's how, and that was one qualifier 1 match which they lost in one of the years, 2020 or 2021. But other than that, 6 out of 7. That's a very, very excellent record, close to 90% success rate in knockout matches. And as Thisara Pereira said, what has happened in the past has happened. They have not enjoyed a very good year. They have enjoyed you don't enjoy a sorrow year, sorry. They have had a sorrow year so far, and they have just been lucky to scrape through to the knockouts. But just that one thing, that sometimes your big players can quite come to the fore. Who are those big players? David Miller, Thisara Pereira, Shoaib Malik. These are your big players, and they might just come to the party in the knockout scenarios. But just to give you a little bit of more information about these two teams, Jaffna this year have won only 3 games, and 2 of those have come against Colombo Strikers, while 1 came against Gaul Titans. They played 2 matches against Kandy, lost both, whereas the Kandy themselves are coming on the back of back-to-back losses in this particular fixture. Hello, warm welcome, Swapnil. Could this be the night? Could this be the night where, for the first time in Lanka Premier League history, we see someone other than the Jaffna Kings make it through to the final? Great chance. Sorry, before I interrupt you, a win tonight does not mean that the winner goes to the final. Oh, what a delivery! What a delivery! Well. That answer can wait, because Nuwan Thushara has just made Fakhar Zaman's stumps a mess. Beautiful in-swinger. In fact, the previous delivery was also an in-swinger, but on that occasion, Fakhar Zaman's bat came down in time, and the ball went up the inner half of the bat back to the bowler. But this one,
pitched on off stump. Fucker tried to drive it straight, but missed, and the ball went right through the massive yawning gap between bat and pad to knock the three stumps out of the ground. Well, Fakhar Zaman walks back in a massive match. He's gone for a duck. 0 from 2. And well, are these the first signs for the Jaffna Kings? Well, yes, just to inform you, the winner of this game doesn't make it to the final, but the loser is knocked out. Now, if Jaffna Kings win tonight, lose tonight, this will be the first time that we will have a final which does not involve Jaffna Kings. Now you can probably add some spice to your answer, because you are about to say, you never, if I can read your mind, that is, you never know, etc. Things might change, and they could not have asked for a better start. But even I couldn't have started with this kind of a situation. 1 for 1, and what a ball to get that wicket. It was just perfectly pitched, and it swung a bit towards the left-hander and got the best out of the timber, going for a walk in the ground. And almost now again in the second match of this day, we have a situation where a batter is come almost like an opener in the first over itself. On this will be the fifth ball of the over, and he's also near to that 1,000 runs mark is Dinesh Chandimal. 966 runs in the Lanka Premier League. Talking about the finals, I always think that number 3 and number 4 have a extra stair to climb with that eliminator, and again the qualifier 2, and then we make it to the finals. So there, there anything can happen. But for time being, one thing is for sure: any team visits that final room to unleash their skills for the trophy. This is again going to be a season which will be remembered for great ups and downs, where the teams were 75s all outs and the teams were 200s, and everywhere there was an this uncertainty. Now once again that swing, what an over this has been so far. Everybody is expected to be come to you no matter where you're standing, because the players, the batters especially, are just getting the bat down in time. And now if it would have been late for that bat to come down, it would have been a probable wicket. But yes, this is a kind of a first over you need to have under your belt when you are going to chase a target, and especially from Tusara, it is just expected because of his swing. And now again leaving the off stump, leaving the outside edge of the bat, so close to both the timbers, but nevertheless harmless delivery at the end. 2 for 1 are the wheel of Kandy after the end of first over. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे। आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव। What a start by the Jaffna Kings. Is this the night? Cometh the hour, cometh the champions. Well, they have huffed and puffed and somehow made it through to the knockouts. But you know what will the champions say at this stage? They will say whatever happened has happened. You can't change it. But what you can try and change is your path to the future. No one has seen the future. So you might have had an ordinary tournament so far. It happens with everyone, but you're not being knocked out. You have not been knocked out till you have been knocked out. So fight it hard, get the big guns to fire. And when I talk about the big guns, just hear the names that could possibly play a key role in tonight's match. Shoaib Malik,
David Miller, Tisara Pereira, Asela Gunaratne, Mahesh Tikshana, and who knows, Chris Lynn and Ramanullah Gurbaz also can have their say. And Charit Asalanka, who's actually another future for Sri Lankan cricket, could have his say as well. They've started well in the form of Nu and Tushara. If the others can step up, it would be a wonderful, wonderful thing. So, chance of a run out again, but I think it was a well-judged single. I would want to know who was that fielder at mid-on. I'll get that fielder to you in a moment, because whoever was that fielder was weak with his left hand, and he was running from short mid-wicket to his left, and the batter probably took advantage of that fact. It was Mohammad Haris. He probably knew that the fielder was right-handed, and he would have taken some time to transfer the ball to his right hand and then throw it at the stumps. Or if he had thrown it with his left hand, he would have probably missed the stumps. Now that probability worked in Haris's favour, and the score now moves on to 5 for the loss of a wicket. Yes, and this kind of a fielding effort, if at all it is fruitful, will give one more pressured start, one more hike in their start, because what happens here is We Love Kandy are into their own zone. Now, own zone is, I'm trying to say that the decision that went against them at the toss. Even Hasaranga said that they would have liked to bat first, because after the first 20 overs, it's the same repeat pitch that we are using. The wicket is the 40 same. The 40 overs in the first match, and then it will be 60 overs if at all they bat the entire 20. Now it's Stump, plumb in the front of the stumps. He's out, down on the ground. Down on the ground is he, and has he been deviated by the fact that he thinks that it's an inside edge. No, everybody says no except for Karthik here. Yes, Karthik, your take? Well, I thought that was crashing into the stumps, but why does Ramanullah Gurbaz feel it's going down the leg side? I still don't know why does Ramanullah Gurbaz feel, because he immediately indicated to Tikshana that it was going down the leg side. Tisara Pereira was at mid-off, so I don't blame him. He's asking, yes, even Tisara Pereira is asking whether it is sliding down the leg side. I want to see first the ultra edge, of course, whether there was any inside edge, and second, was that ball sliding down the leg side. Now this one, the carom ball outside the off stump, short, and it is punched straight to Shoaib Malik at short extra cover. But your gut feeling, with the naked eye, what is your first thing? Yes, it was out. That was out because that one skid, right? I thought the keeper was telling it was towards the leg side, but the bowler thought that it might have got the inside edge, but neither was true, I think, as per my gut feeling. But we'll wait for the replays to pop up again, and we'll have a closer look, and it will be shown, because it was a close one. 2 overs now, it is 5 for 1. We'll look at the team. See, it's Mohammad Haris, Fakhar Zaman is out, Dinesh Chandimal, Hasaranga, it is Arachige, Angelo Matthews, Asif Ali, and it would be Kamindu Mendes, Asru Udana, Mujibur Rahman, and Nuwan Pradeep. That is a huge 11 to have. And what else do you expect from these batters? Where you see likes of Vanindu Hasaranga in the first 5 players who have into the leading scorers. Imagine how decent or how good the bowling would have been in this tournament, because specialist batters are not getting those runs, but the players you don't work for generally as a batter are getting into the runs. So that is where you have seen ups and downs in this tournament so far. Third over in progress. It is Dilshan Madhushanka, the bowler, to bowl it to Dinesh Chandimal. I found him interesting when he used to play for Sri Lanka at a very young age. He entered a team, and he was that news of that year when he entered the zone of international arena, and he was striking the ball well. He was playing against all oppositions, but then there was a slack in his career, and he was not able to even find himself in the playing 11, and he lost his captaincy. Then he just lost his spot in the playing 11. So it can happen to a player. Now he's back to the good days that he has seen earlier, and with this kind of form that he's carrying here, a boundary towards the wideish long off region through the
almost to the covers region, and this is a positivity he needs to inculcate in the batting of his team, because he's one of the prominent stalwarts that the youngsters would have seen in this Lanka Premier League. All the players who have, not only the players who have played for Sri Lanka or any other country who are part of this, but any player who has the ability to be a good game reader can be your mentor, because it's very important to read the game. Not only your batting or bowling, but reading the game is very, very important. And back-to-back boundaries, just ensuring that they are into the runs and the flow of runs is continued. A kind of a delivery which was straight as skid on. He just rolled his fingers on the seam of the ball, and the ball did not do much as he would have anticipated. But a good looking boundary straight down the ground, and it is 13 for 1 in 2.3. Why, Thisara, would you want to change that bowling end of Nuwan Tushara? I don't understand, because he bowled a brilliant opening over where the ball was swinging, and it is not like England where the ball is going to swing for 2 hours or 3 hours. And suddenly, I think you mentioned about reading the game. Dinesh Chandimal has read the game to perfection. He saw that the first over was bowled by Nuwan Tushara, absolutely unplayable. Second over was bowled by Mahesh Theekshana, also kind of unplayable. But Dilshan Madhushanka has looked nowhere close to being unplayable, and he thought, okay, now this is my chance. I will try and attacking. I will try and counter punch, and in next to no time, well, this score has just rocketed to 13 for 1 in 2.4 overs. Okay. So Theekshana was right in that LBW appeal towards Mohammad Haris. There was bat involved. The keeper though felt that it was going down the leg side, but all's well that ends well. And now probably question has to be asked to Thisara Pereira. There's a run out appeal now, but I think that Chandimal has made it at the non-strikers, and it was a push and run by Chandimal towards Thisara Pereira at mid-off, and a quick single was taken. Thisara came in and underarmed his throw at the bowler's end and hit them as well, but just that gut feeling seems to say that the bat was well in, and he has dragged his bat in, and he's well in. In fact, the foot also is well in. So I'm not able to quite understand the logic of Thisara Pereira of holding back Nuwan Tushara for the death overs or whatever it is. When a bowler is bowling so well and when he has the swing in his favour, why don't you continue? Final delivery of the third over then on a length outside the off stump, and that's punched beautifully by Mohammad Haris. No power, all placement, just angling his bat and to guide it behind point, and that ends a very, very expensive third over and an opening over from Dilshan Madhushanka, where he has gone for 13. Is this the sign of the change of momentum? We'll know in a while. 3 gone. The Beal of Kandy, after being asked to bat first, are 18 for 1 in the Eliminator. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे। आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी। Dunit Velalage is come to bowl the 4th over. 4 different bowlers in first 4 overs, failing to understand the strategy. Because if he has kept his prime bowler Tushara for the death overs, you're thinking too much on a defensive note. You're not feeling like attacking the batters up frontly. You're allowing them to settle down. You're asking every bowler to come and bowl an over apiece. And what will that do? It will do you no good. Because if at all you want to pressurize the batter, you get your best bowlers on. That is the
that is the basic trick that you need to apply. That is the basic you need to apply yourself. And as a captain, if you're doing this kind of strategy, it is no strategy at all. Four different bowlers, not allowing either the bowlers to settle down, neither the fielders to get into the groove of setting themselves for a standard line and length. This is what you're getting in return, boundaries. And then in return, what happens? Now he is being told something by Thisara Pereira, and that is why he's shaking his head while going back to his bowling mark that I need to bowl a little fuller or a little slower. Why not Nuwan Tushara? Just give him yet another over. Why does a captain think about the 18th and the 19th over in the first power play overs? I mean, are you not confident enough of getting wickets up frontly? Why are you playing those bowlers? A good answer, true answer expected from every captain who does this kind of a strategy. I might be harsh, but I fail to understand if you're not giving even the second over to your best bowler. When now he'll be all cooled down, he'll be somewhere at the deep guarding the boundary. He'll be all cooled down, and he's not into that zone where he bowled at first over. If you give him that second over straight away in the third over of the innings, he can produce you much more effective over rather than giving out 3 boundaries in the previous over, a boundary in this over, and it's not building the pressure. You are playing a crucial match. Loss and you're out. A win can take you forward, but a loss can earn you only a return ticket to your home place. That's not going to help, and I fail to understand the mindset from Thisara Pereira. Yeah, last ball. Now it was driven, but not a full connection, getting the bottom edge of the bat. Ending the fourth over with a single 24 for 1 are the Beal of Kandy after being asked to bat first in this eliminator. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा और क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड Change of ends for Mahesh Tikshana. He bowled from the end from where Dunit Vellalage bowled. So this I can still understand a change of end for Mahesh Tikshana, but I genuinely don't understand 4 bowlers in the first 4 overs. And normally when Swapnil asked about what is actually discussed in that dressing room, we always discuss a plan and then we have a backup if that plan does not work. So I can understand if the first 2 overs went for 25, went for 30, the batsmen are having a say, and then you made some changes in reaction, then yes, definitely do. But if things are going well for you, why wouldn't you stick to your plan? Because as per your plan, you would have nominated certain couple of bowlers to bowl at the death, which means Tushara would be bowling 2 overs up front and then 2 overs at the death. And if Tushara's 2 overs were very costly or very economical, then you would have had to make a reactive plan. Okay, my plan A has failed. What is my plan B? But not necessarily to enforce. Sometimes you say you overthink and try too many things, and too many cooks always spoil the broth. A bad delivery from from Tikshana down the leg side. Chandimal gets down and moves the slog sweep between short fine leg and backward square leg. And Hasaranga would be quietly smiling, looking at whatever is happening out there. Now this is the carom ball. This pitches and then just shoots up. And Chandimal is all at sea as he somehow manages to play that towards short third. He came to offer a forward defense, but instead he had to take his hand off the bat, and somehow the ball hit the surface of the bat and rolled. In fact, it is the top handle of the bat and rolled towards short third. So Hasaranga would be very happy. He would ask his batters, give me 150 and I will give you a ticket to qualifier 2. Now Mohammad Haris switching on his T20 mode, actually aggressive T20 mode. He was playing very watchfully so far. Fuller and on middle, he just he changes his stance a little bit, brings out the reverse sweep and nails it over backward point for the second boundary of the over. So after that excellent first over,
After that excellent second over, what have we witnessed? 4, 10, 16. So we have witnessed 6 boundaries in the last 16 balls, or make it 6 boundaries in the last 15 balls. That means every second ball or every third ball is a boundary. And now, is that a missed stumping by Rahmanullah Gurbaz? I think he has missed out on a stumping of Mohammad Haris. It was fired down the leg side, and Mohammad Haris is busy asking the umpire why wasn't it signaled a wide. Yes, now Alimdar has signaled a wide, and Mohammad Haris lost his balance and Rahmanullah Gurbaz behind the stumps fumbled a little bit, and then he collected the ball and took the bails off. And he has appealed for a stumping, but my gut feeling somehow says that Mohammad Haris has got back. It was a mistake. And it was a carom ball from Mahesh Tikshana, fired down the leg side. And okay, now I understand why has Tikshana complained to the umpire. He's complained to Alimdar why was it signaled a wide, because he reckoned the ball has gone off the pads. And yes, the replays do show that the ball has gone off the pads. There will be a check for the ultra edge, but nothing on the ultra edge, and the ultra edge shows a spike when the ball hits the pad. I'm not sure Alimdar can reverse his wide decision. Can he reverse his wide decision? We'll have to wait and see. I'm not too sure about that because the umpire is not allowed to reverse his decision after looking at the giant screen. Now come for the stumping, and yes, Rahmanullah Gurbaz has just missed that ball, and then he tried to collect the ball. It rolled in front of him, tried to collect the ball and hit the stumps. The Mohammad Haris's bat did not come into the crease, but his left leg came back into the crease. Now it's interesting. What will Alimdar do? Oh, well, he signaled out first. First of all, he signaled out, but then yes, he's given it a dot ball. So that's one thing. Now this is in the air. Has this cleared the boundary? No, it has not. It has cleared mid-on for sure. And Shoaib Malik running back from mid-on gets to the ball and keeps the batters to a couple. So that's one interesting, nice way of technology, that you can change your decision after having a look at the giant screen. So opportunity missed by Rahmanullah Gurbaz, and Tikshana is frustrated because he has gone for 12 runs in this over. 5 gone. Beat of Kandy, after being asked to bat first, are 36 for the loss of a wicket. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे। आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट। काफी कुछ होता हुआ उस आखिरी ओवर में, 5वीं ओवर जो थी, 12 रन आए, एक अपील हुई, स्टंपिंग मिस हुई, सब कुछ हुआ और फिर भी बील ऑफ कैंडी 37 रनों पर, क्योंकि नुआन तुषारा जो अब आए हैं आखिरी ओवर करने के लिए पावर प्ले के, मतलब बहरहाल आए तो हैं, देखेंगे कि पहले जैसा दमखम दिखा पाएंगे नहीं। एक शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी बाहर जाती हुई ऑफ स्टंप के, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि कट कर दिया है उनको और मिल गया है 4 रनों का इजाफा। यहां पर क्या होता है अक्सर जब आप करते हैं पुनरागमन 4 ओवर के बाद, आपने पहली ओवर डाली थी, आपने तीसरी डालनी चाहिए थी, लेकिन आप आए हैं 6ठी ओवर डालने के लिए। अब आप थोड़े से ठंडे होते हैं, फिर एक बार वो ग्रूव में आना चाहते हैं, उस लय में आना चाहते हैं, और अगर आप जल्द से जल्द नहीं आ पाए तो थोड़ी सी तकलीफ आपके लिए हो सकती है। यहां पर फिर भी देर आए दुरुस्त आए, अगर एक आध विकेट यहां पर इस ओवर में ले पाए अपने टीम के लिए, अपने कप्तान के लिए, तो बहुत अच्छी और बहुत ही प्रशंसनीय ये मुलाकात उनकी होगी।
मुलाकात किससे? जी हाँ, मुलाकात उस लय से जो उन्होंने पहले ओवर में प्रस्तापित की थी। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक ओवर करी थी उन्होंने, पहली जो ओवर हुई थी, और उसमें जो फकर जमान को क्लीन बोल्ड कर दिया था, उसका तो जवाब नहीं था फकर जमान के पास। और उसके बाद 43 रनों की यहाँ पर साझेदारी पनपती हुई, दोनों 42 रनों की साझेदारी यहाँ पर 5.2 ओवर में। ये छठी ओवर का आगाज बहुत ही अच्छी तरह से, मिड ऑन ऊपर है, कोई फील्डर पीछे नहीं। दूसरा 4 रनों के लिए जो शॉट खेला है वो बहुत ही बेहतरीन था। दिनेश चंडीमल को आप ऊपर वाली गेंद नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रांग है, फ्रंट फुट पर आए, दिशा दिखाई गेंद को और बल्ला उसी दिशा में घूमा जहां पर फील्डर नहीं था। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। फिर एक बार शॉट ऑफ द लेंथ डिलीवरी। ये अगर आप लेंथ करने वाले हो, ये अगर आपकी लाइन होगी ऑफ साइड ऑफ स्टंप की और लेंथ होगी शॉट ऑफ द लेंथ, तो काफी तकलीफ में आ सकते हैं आप, और अपने लिए और अपने कप्तान के लिए, अपने संघ के लिए ज्यादा मदद नहीं होगी। फिर आपकी थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। यही होता है जब आप लय में होते हो, तभी आपके कप्तान ने आपसे ओवर नहीं करवाया, और यहां पर आप 11 रन दे चुके हैं पहले 3 गेंदों में। देखते हैं आगे क्या होगा इस ओवर का हशर। और ये पुल कर दिया है बिल्कुल सही दिशा में, क्या बात है। 6 रनों का इजाफा यहाँ पर, एक बहुत ही बढ़िया सिक्सर यहाँ पर आता हुआ। 17 रन हो गए हैं इस ओवर में अब तक, और 2 गेंदें शेष है। 53 पर खेल रहे हैं के बल्लेबाज। 53 पर 1 हो गया है स्कोर। 52 रनों की यहाँ पर साझेदारी, तो 50 रन यहाँ पर पार कर लिए हैं। और ये बहुत ही अच्छा स्ट्राइक था। मतलब आपने सब भुला दिया है कि पहले इस पारी के पहले 6 गेंदे जिनके आपने तकलीफ में खेले थे, उनको आपने यहां पर रन के लिए मतलब 14-3 17 रन, और इसी छक्के के साथ जो बहुत ही एक अच्छे उम्दा प्लेयर हैं क्रिकेट बॉल के, व्हाइट बॉल के, दिनेश चंडीमल, उन्होंने भी 1000 रनों का आंकड़ा एलपीएल में पार कर लिया है। बिल्कुल, आज ऐसे लग रहा है कि आज माइलस्टोन्स का दिन है, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने कुशल मेंडिस का भी रिकॉर्ड देखा था, जहां पे वो सिर्फ दूसरे प्लेयर बने जिन्होंने 1000 रन बनाए हैं लंका प्रीमियर लीग में। और हमने एक्सपीरियंस की बात की थी फ्रॉम जाफना's पॉइंट ऑफ व्यू, पर हमने कैंडी के बारे में तो बात की ही नहीं एक्सपीरियंस के तौर पर। और जहां तक अनुभव का सवाल है, दिनेश चंदीमल एक ऐसे ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो हो सकता है आज उनका भी दिन हो। और फिर एंजेलो मैथ्यूज, उनसे बड़ा कोई एक्सपीरियंस है क्या इस पर्टिकुलर लाइनअप में? तो ये 2 एक्सपीरियंस और इसरू उदाना, ये 3 एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जो आज स्टेप अप करने की कोशिश जरूर करेंगे। इन शॉर्ट, जब भी नंबर 3 नंबर 4 से खेलती है, तब ऐसे एक उम्मीद होती है कि एक अच्छा मैच हो, क्योंकि दोनों के पास काफी चीजें हैं इंप्रूव करने के लिए, और दोनों को एक दूसरे के वीकनेसेस पता है। इसी बीच क्या फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया शॉट, पावर प्ले खत्म करने के लिए एक ओवर पिच गेंद, आउट स्विंगर अवे फ्रॉम द ऑफ स्टंप, और मोहम्मद हारिस ने उसे सिर्फ टाइम कर दिया है कवर्स के थ्रू, और ये एक चौका भी बन जाएगा। 6 ओवर के बाद यहाँ पर बी लव कैंडी है 58 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ये ओवर में 22 रन आ गए। इनफैक्ट लास्ट 2 ओवर में 34 रन आए हैं, और पूरा मोमेंटम जो है वो बी लव कैंडी की तरफ यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ। 1 सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद स्ट्रेटेजिक ब्रेक ले रहे, लेकिन नहीं, ये फिलहाल सिर्फ एक ओवर ब्रेक है। लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में
और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिक। क्या से क्या हो गया, ये ऐसे कुछ सोच रहे होंगे नुवन तुषारा, जिन्होंने एक बेहतरीन पहला ओवर डाला और तब ऐसे लग रहा था कि जाफना किंग्स जो है पूरी तरह से बीलफ कैंडी को जमीन में गाड़ी हुई है और अचानक पूरी तरह से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। और उसका कारण खुद उनके कप्तान तिसारा परेरा ही है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि क्यों तीसरा ओवर नुवन तुषारा को नहीं दिया गया। चलिए, चौथा ओवर महेश तीक्षणा को नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें चेंज ऑफ एंड्स करना था। और जब अंतिम ओवर में आए पावर प्ले के गेंदबाजी करने के लिए नुवन तुषारा, स्विंग का सर्व ही नहीं था वहां पर। तो ये ऐसे होता है, कई बार होता है जब एक खिलाड़ी जो है एक लय प्राप्त करता है तो वो लय सदा के लिए नहीं रहती। और चाहे वो बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, आपको उसे एक्शन में रखना होता है क्योंकि स्विंग भी एक ऐसी चीज है आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप कह नहीं सकते कि स्विंग यहाँ पर 4 ओवर रहेगा, 5 ओवर रहेगा, 3 ओवर रहेगा। वो अपनी मर्जी का मालिक है स्विंग। तो वो जो है वो एक निर्धारित समय तक रहता है और वो एज ए ह्यूमन बीइंग आपको पता चल पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद 3 ओवर रहेगा या आधा घंटा रहेगा, पर आपका काम है जो न्यू बॉल बॉलर है उसे पूरी तरह से उस स्विंग का उपयोग करने दे। और जब नुवन तुषारा इतना उपयोग कर रहे थे, इतनी अच्छी तरह से उपयोग कर रहे थे, पहली ओवर में ही 2 विकेट ले सकते थे, आपने उस समय पर बिना कोई कारण के उन्हें चेंज कर दिया। और अब अचानक से जो टीम 2 रन प्रति ओवर से बल्लेबाजी कर रही थी पहले 2 ओवर में, अचानक से अब 10 रन प्रति ओवर से के साथ बल्लेबाजी कर रही है। और अब ऐसा लग रहा है किस्मत भी उनके साथ है क्योंकि एक छोटी गेंद डाली है यहाँ पर और इसे पुल करने का प्रयास था दिनेश चंदीमल द्वारा, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया और फाइनले के पास चली गई, लेकिन फाइनले के हाथ में नहीं गई, उनके आगे जाकर गई। 61 एक विकेट के नुकसान पर बीलफ कैंडी। बिल्कुल, और ये एक अच्छा माहौल बन चुका है बल्लेबाजों के लिए। देखिए, पावर प्ले खत्म हो गया है, ऐसे लग ही नहीं रहा है क्योंकि आराम से खेल रहे हैं, अपने शॉट है, बिल्कुल ढूंढ रहे हैं वो जगह जो अपने मन को भाती है और पुल कर दिया है। अभी ये फ्रंट लेग पर जाकर ये आगे जाके देखिए कितनी अच्छी पोजीशन में थे और बिल्कुल ये एक शॉट जो आपको आनंद देगा। मोहम्मद हारिस जो एक अच्छे बल्लेबाज हैं और दमखम रखते हैं, तेज गेंदबाजी की तरफ अपना एक ऊपरी जो भाग है अपने बल्ले का, उसको बहुत ही अच्छा यूज करते हैं और बॉटम हैंड जो यूज करते हैं बहुत ही बढ़िया। मोहम्मद हारिस जब आप देखेंगे तो एक स्लो स्टार्टर है, लेकिन उसके बाद जब वो लय में आते हैं तो बहुत ही उम्दा खेलते हैं। और शायद यही कारण है कि दिनेश चंदीमल भी उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आपने 17 गेंदें खेल ली, 26 रन बना चुके हैं, आप कोई भी शेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप स्लो नहीं है, आप सही खेल रहे हैं, यही आपको कहना होगा। क्योंकि एक 10 ओवर की तरफ आप जब रुक करते हैं पावर प्ले के बाद, तो 4 ओवर ना कभी कभी आपको वो ट्रांजिशन लाने के लिए, क्योंकि पावर प्ले में एक फील्डर कम होता है और उसके बाद जब भी फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं तो एक वो छोटा सा ट्रांजिशन आपको चाहिए होता है, लेकिन वो लाने के लिए आपको आपका माइंडसेट वैसा बनाना पड़ता है। लेकिन अगर दिनेश चंदीमल जैसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज के साथ आप बल्लेबाजी कर रहे हो तो उस ट्रांजिशन के लिए थोड़ी सी क्या कहते हैं हम सुलभता हो सकती है। यहाँ पर 7 ओवर समाप्त हैं, यहाँ पे स्ट्रेटेजी टाइम आउट की घोषणा 69 पर 1 है बी लव कैंडी टीम।
और यहां पर जैसे ही स्ट्रेटेजिक ब्रेक समाप्त हो गया है, एक बड़ा झटका लगा है बी लव कैंडी को और दिनेश चंदीमल को वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि काफी स्ट्रेट गेंद थी। असेला गुणरत्ने ने कुछ उसमें ज्यादा अतिरिक्त नहीं किया, वो एक एक्चुअली ऑफ स्पिन भी डालते हैं और मीडियम पेस भी डालते हैं। ये एक मीडियम पेस गेंद थी और दिनेश चंदीमल ने एक्चुअली बैक ऑफ द हैंड से डाली थी और दिनेश चंदीमल ने स्लॉक स्वीप खेलने का प्रयास किया, चूक गए और उनके गेंद उनके बैक पैड पे जाके लगी और अंपायर ने तो सीधे सीधे आउट दे दिया। और उन्होंने अपने पार्टनर से पूछा क्या मैं रिव्यू लूं, लेकिन मोहम्मद हरीस ने कहा जी नहीं, आप रिव्यू वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ना ये ऑफ स्टंप को लग रही थी, ना ये मिडिल स्टंप को लग रही थी, ये सीधा जाके लेग स्टंप को लग रही थी। और अगले बल्लेबाज आ रहे हैं जर्सी नंबर 200, जो इस टूर्नामेंट के नंबर 5 पर हैं एज लीडिंग रन स्कोरर। क्या आप विश्वास करेंगे, नंबर 5वें पायदान पर है वनिंदु हसरंगा, वो आए हैं नंबर 4 पर। एंड ऑफ कोर्स हम ये तो नहीं कह सकते वो उन्हें प्रमोशन मिला है, वो डिजर्व करते हैं, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और उनकी टीम जो है पहले 2 ओवर में तकलीफ में थी, लेकिन अभी काफी मजबूत स्थिति में है। हालांकि दिनेश चंदीमल आउट जरूर हुए हैं, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर साझेदारी का समापन होता हुआ, क्योंकि इस साझेदारी ने जोड़े हैं 68 रन और 68 रन जोड़े हैं सिर्फ 39 गेंदों में। पूरा काउंटर अटैक जो है, सारा दबाव जो है उन्होंने जाफना किंग्स पर डाल दिया, वापस डाल दिया। पर जैसे कि कहते हैं वो स्ट्रेटेजिक ब्रेक को इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किया गया है T20 में, ताकि जिस टीम के पास मोमेंटम हो वो मोमेंटम छीन जाए और दूसरी टीम को वापस आने में मदद मिले। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ, असेला गुणरत्ने को गेंद थमा दी गई और पहली ही गेंद पर उन्होंने विकेट निकाला और वो भी दिनेश चंदीमल का। अगली गेंद इस बार डाउन द लेग साइड, उसे सिर्फ दिशा दे दी हल्के हाथों से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन वनिंदु हसरंगा के लिए और उनका यहाँ पर खाता खुल गया है 70। 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर बी लव कैंडी फखर जमान आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, दूसरे गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। और जब ऐसी गेंद आपको मिलती है, आप सिर्फ बॉलर को या गेंदबाज को नमन कर सकते हैं और कह सकते हैं, या सजदा कर सकते हैं और कह सकते हैं बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की आपने। और इस बीच ये वाली गेंद बाहर की तरफ गई। जी हाँ, बिल्कुल मोहम्मद हरीस भी इंडिकेट करते हुए वनिंदु हसरंगा को, क्या ये भाई साहब लेग स्पिन भी डालते हैं, क्योंकि पिछली जो चंदीमल को आउट की थी वो वाली गेंद चंदीमल के अंदर आई थी, लेकिन ये वाली गेंद जो है बाहर की तरफ चली गई और पूरी तरह से बीट कर गई मोहम्मद हरीस को। बिल्कुल, और ये इस पारी का थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये गुणरत्ने गुणों का एक ऐसा रत्न है ना, मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने पहली ओवर की पहली गेंद पर एक ऐसी सटीक गेंद डाली जहां पर दिनेश चंदीमल को कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और एक अच्छी खासी साझेदारी यहाँ पर टूट गई। और जहां तक मैं सोचता हूं, हारिस जो अब तक थोड़े से शांत हैं, 19 गेंदों में 26 रन बनाए। ये होता है अक्सर जब आप एक पार्टनरशिप में होते हो। 68 रन की वो एक साझेदारी थी, उसमें अगर आप गिने तो 24 रन शायद हुए होंगे हारिस के और बाकी तरफ थे चंडीमल के। तो अगर आपका एक सेट बैटर जिसने ज्यादा रन बनाया वो आउट हो जाता है ना, तो उसके बाद आप पे प्रेशर तुरंत आ जाता है, क्योंकि आप फिर सोचने लगते हैं कि अरे मैंने तो उस साझेदारी में रन बनाए नहीं है और अभी मेरे भी कितने रन है, तो मुझे भी अभी थोड़ा सा स्कोरिंग रेट बनाना होगा। और उस बढ़ोतरी के उस कार्यकाल में ना, जब आप प्रेशराइज फील करते हो तो उसमें आपके गलत शॉट लगने की आशंकाएं ज्यादा होती है। और यहाँ पे देखिए, एक विकेट ले लिया है इस ओवर में और बहुत ही बढ़िया ओवर, सिर्फ 3 रन दिए, 2 रन बैट से 1 लेग बाय, खत्म हो गया है 8वां ओवर। 72 पर 2 है बी लव कैंडी टीम। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड
दुनित वेल्ला लगे आए हैं अपनी दूसरी ओवर फेंकने के लिए और पहली गेंद पर वनिंदु हसरंगा ने बैठकर स्लॉक स्वीप मारने का प्रयास किया है। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया उसको और एक रन प्राप्त कर लिया। बहुत ही मुश्किल है असेला गुणरत्ने के बॉलिंग स्टाइल को जज करना, क्योंकि वो डाल तो रहे हैं मीडियम पेस, लेकिन उनकी जो कंट्रोल है गेंद के सीम पर, उस पर वहां पर प्रशंसा जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो गेंद को अंदर भी ला सकते हैं और गेंद को बाहर भी निकाल सकते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज या बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। तो जैसे कि मोहम्मद हारिस को भी तकलीफ हुई, जो भी खिलाड़ी असेला गुणरत्ने को पहली या दूसरी बार ही खेल रहा होगा उसे तकलीफ तो जरूर होगी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा कि किस तरह के गेंदबाज है। क्या मैं इन्हें एज अ स्पिनर ट्रीट करूं या फिर मैं उन्हें एज अ मीडियम पेसर ट्रीट करूं। फुल टॉस और यहाँ पर किस्मत अच्छी थी वेल्ला लगे, क्योंकि तिसारा परेरा सामने खड़े थे। फुल टॉस पर प्रहार किया वनिंदु हसरंगा ने, लेकिन सीधा तिसारा परेरा की तरफ जो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में खड़े थे। 74 2 विकेट के नुकसान पर बी लव कैंडी। बिल्कुल। और जब आप देखते हैं ना कि जैसे हारिस ने वो एक्शन किया कि अरे भाई ये तो लेग स्पिन भी कर रहे हैं, ऑफ स्पिन भी कर रहे हैं, थोड़ी सी मीडियम पेस भी डाल रहे हैं, तो कैसे खेले। याद आ गई थी मुझे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की, कुछ भी डालते थे। जब वो उन्होंने पूछा गया कि आप ऐसे कैसे डालते हो, तो वो कहते थे हमेशा कि मैं ग्रिप पे ध्यान नहीं देता, मैं जब बॉलिंग क्रीज पॉपिंग क्रीज पे पहुंचता था तब मैं सोच रहा कि अभी क्या डालना है, तो वो वैसे ही डाल देते थे और इसीलिए उनको ज्यादा विकेट्स मिले हैं। और आपको हंसना पड़ेगा कार्तिक, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आ गई है ना, जैसे आप एक स्टैग्नेंसी कभी कभी देखते हैं, उसके चांसेस हो जाते हैं। जब भी आपका एक सेट बैटर आउट हो जाता है, उसके बाद आपको एक अच्छी साझेदारी में फिर एक बार जाना होगा। हसरंगा काफी एक्सपीरियंस है, ऐसे सिचुएशंस में हमेशा आते हैं, अपनी टीम को वहां से बाहर भी ले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा शॉट खेल दिया है कवर्स के ऊपर से। वहां पर एक स्वीपर कवर मौजूद है जो कट करेगा उस बॉल को बाउंड्री के पहले। 9 ओवर की समाप्ति 77 पर 2 है बी लव कैंडी। मेरे हंसने की क्या जरूरत है, हंस तो किस्मत रही है तिसारा परेरा पे जब उन्होंने वो तीसरा ओवर नुवन तुषारा को नहीं दिया। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे। आइए आपका इंतजार था, ये हम नहीं कह रहे, ये वनिंदु हसरंगा कह रहे हैं, क्योंकि असेला गुणरत्ने की अगली गेंद पर प्रहार कर दिया उन्होंने और धावा बोल दिया है सीधा साइड स्क्रीन की तरफ 6 रनों के लिए। और यहां पर काउंटर अटैक के मंशा से ही उतरे हैं वनिंदु हसरंगा। और क्यों ना हो, क्योंकि वो टूर्नामेंट के लीडिंग रन गेटर्स में से एक है, टॉप 5 में है, तो अगर वो फॉर्म में है तो वो फॉर्म का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो अपने विकेट को ना गंवाए, बस यही इच्छा है, क्योंकि कभी कभी ऐसे अटैकिंग शॉट्स खेलते वक्त ऐसे हो सकता है कि आप जो है काउंटर अटैकिंग करते करते अपना विकेट भी गवा बैठे, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ में तो गेंद ही जा रही है बाहर। एक और फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, उस पर प्रहार किया, स्लॉक स्वीप और लॉन्ग ऑन के ऊपर से बैक टू बैक सिक्सेस के लिए 89 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर बी लव कैंडी और वनिंदु हसरंगा आए कब ये तो पता ही नहीं चला, लेकिन फिलहाल खेल रहे हैं 9 गेंदों में 18 पर और इन 18 रनों में उन्होंने 2 छक्के लगाए हैं और बाकी 6 रन उन्होंने भागकर हासिल किए हैं। तो असेला गुणरत्ने जिन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और 1 विकेट भी हासिल किया, अचानक से जैसे कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी आ गई है। अगली ओवर में तीसरी गेंद इस पर भी प्रहार किया, लेकिन इस बार सिर्फ एक सिंगल मिलेगा वनिंदु हसरंगा को। लॉन्ग ऑन की तरफ स्लॉक स्वीप खेलने का प्रयास, तो 90 2 विकेट के नुकसान पर 9.3 ओवर में। और अब फिलहाल कैंडी जो है उस तरह की क्रिकेट खेल रही है जो ये दर्शाता है कि हम आपसे एक बेटर टीम है। बिल्कुल, और ये आपको जताना ही होगा, बार बार आपको ये जताना होगा, क्योंकि अगर आपने बॉलर को या किसी भी प्रकार के उनके दावपेच को अपने आप पर हावी होने दिया, अगर आप बैटर भी हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि बॉलर सेटल हो जाए। और अब हारिस कह रहे हैं सीधा बॉलर से कि आप एक बार बाहर ला रहे हैं, एक बार अंदर ला रहे हैं, लेकिन उसका जवाब ढूंढ लिया है यहाँ पर हसरंगा ने
कि आप 2 छक्के मार दो, फिर बॉलर चाहे कुछ भी डाले, आपकी नजर इतनी तेज होती है कि आप उसे कहीं भी खेल सकते हैं। ये 5वीं गेंद देखते हैं, और ये क्लीन बोल्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि लालच बुरी बला है। बिल्कुल। और द लास्ट लाफ जिसे कहते हैं वो होगा गुणरत्ने के पास, क्योंकि अब ये सिद्ध हो गया है कि वो गुणों का भंडार है। कब से हारिस कह रहे हैं कि अंदर ला रहे हैं, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, और ये बिल्कुल सीधी रही। स्पिन के लिए खेले, लेकिन पढ़ने के बाद थोड़ी सी बाहर गई। एंगल्ड डिलीवरी थी, वाइड ऑफ द क्रीज जाके डाली, और हसरंगा के पास कोई भी जवाब नहीं था। यहाँ पर एक छोटी सी पारी 19 रनों की 11 गेंदों में खेलकर हसरंगा जा रहे हैं वापस। 2 छक्के लगाए। गेंद तो ठीक है स्वप्न, गेंद तो अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो शॉट कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि हसरंगा रुकना ही नहीं चाहते थे। वो एक रनअवे ट्रेन की तरह खेलना चाहते थे, जहां पर या तो वो छक्के चौके लगाए या तो फिर कुछ स्कोर ना करे। और जो 2 छक्के उन्होंने लगाए उससे स्कोर में इजाफा जरूर हुआ, बट जैसे कि आपने कहा लास्ट लाफ तो गेंदबाज की तरफ ही हुआ है। और यहाँ पर अचानक से 2 बैक टू बैक, यानी 2 ओवर में 2 विकेट्स मिल गए हैं यहाँ पर असेला गुणरत्ने को। और अब जो है मिडिल ऑर्डर को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा बी ऑफ कैंडी को, क्योंकि इंटरेस्टिंगली एंजेलो मैथ्यूज नहीं आए हैं नंबर 5 पर, कमिंदो मेंडिस को भेजा गया है नंबर 5 पर। और शायद वो इसके लिए, क्योंकि वो एक लेफ्ट हैंड बैटर है और वो असेला गुणरत्ने को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, शायद इसी रीजन की वजह से यहाँ पर उन्हें नंबर 5 पर भेजा गया है। लेकिन मुझे ये चिंता है कि एंजेलो मैथ्यूज अगर पहले 10 ओवर में नहीं बल्लेबाजी करने आएंगे तो फिर जितने जैसे जैसे ओवर कम होते जाएंगे उनका यूसेज जो है और भी कम होता जाएगा, क्योंकि वो एक स्लॉगर नहीं है जो पहले बॉल पर आकर आपको रन स्कोर करके दे, तो उनको समय चाहिए थोड़ा बैटिंग करने के लिए। तो मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज ही उपयुक्त बल्लेबाज होते, पर फिलहाल अगर विकेट की बात करें तो बैक ऑफ द हैंड से डिलीवर किया, इसलिए वो लेग स्पिन हुई। गेंद जो है मिडिल स्टंप पर टप्पा खाकर ऑफ स्टंप को लेकर चली गई, लेकिन फिर भी वो जो शॉट वनिंदु हसरंगा ने मारा, बैक अवे, तीनों स्टंप्स एक्सपोज कर दिए और फिर इनसाइड आउट मारने का प्रयास किया। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, आपने ऑलरेडी 2 सिक्सेस लगाए थे, 2 सिक्सेस लगाए थे पहले 2 गेंदों में, ये शॉट खेलने की क्या जरूरत थी? इसीलिए इंग्लिश में कहावत है ना, हाउ मच इज टू मच, और लालच डेफिनेटली बुरी बला है। एक सिंगल के साथ कमिंदो मेंडिस ने अपना खाता खोला। आधी पारी समाप्त हो गई है 10 ओवर के बाद। यहाँ पर बी ऑफ कैंडी 92, 3 विकेट के नुकसान पर। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगी जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिकॉन ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माई शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलोली ऑन। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है
उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। 11th over in progress, 96 for 3, and Dunit Wellalage has started his third over with some kind of decency, because it's not been all attack mode from the batters for the time being. 4 balls for 5 runs, and Mohammad Haris, 29 of 23, come into Mendes, come ahead of Angelo Matthews, and Karthik had a point where he said that Angelo Matthews is not that kind of a batter who would come and go all guns blazing from ball number 1 against the attack of the bowlers. But yes, somewhere down the line, we are failing to understand the strategies from both the from both the captains now. Because if in the first 4 overs you used 4 different bowlers, that is somewhere out of our reading. And also for the Wheel of Kandy, I think Angelo Matthews would have been a good prospect, because if he would have got settled by the, say, 13th, 14th over, he would have been a great input towards the death overs. For the time being, 11 overs done, 99 for 3 are the Wheel of Kandy. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। क्या आप फैंटेसी Oh, beautiful ball. There was an appeal for an LBW first from the bowler and then an appeal for a catch as the ball went right in between the legs of Mohammad Haris towards Remanullah Gurbaz. But nothing doing, said the umpire. And now another leg spinning delivery from Asela Gunaratne. But it's short in length. So that gives Mohammad Haris ample time to back away and punch it down to long off for a single. There's a little bit of stalling happening in this run scoring of a Wheel of Kandy, but they're still going at a very decent Can rate. I ask you one question? Yes, Swapnil. Gundaratne is bowling his third over on a trot, right? Yep. Why was this mindset absent when Nuwan Tushara was bowling? Absolutely. He bowled the first over so brilliantly. He set up the tone for your innings, and then you are responsible for the 103 for 3. It's your own mistake that has caused you. Because after that, it has been a batter's galore as Chandimal played a good part. Harris is playing a good innings, and always when you think about your mistakes as a captain, you overlook them because you think that you have come with a strategy. But even the fielders have some input to give you. Even the bowlers would have got some point to be made. But sometimes you overlook that, and when you overlook that, you fall into a deep troubled situation. 104 for 3 in 11.5 is a situation would have been say 103 for 6 or 7 if that overs would have been bowled by your prominent fast bowlers. But not to be. Here we are coming to Mendes and Mohammad Haris making their way towards a good finish, as this is the 12th over been done. 105 for 3 are the Wheel of Kandy team.
हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? Right, so certain questions require answering, but as of now, Mohammad Haris is probably making use of the fact that he is now well set into this innings and he becomes a key player. And now LBW appeal, up goes the umpire's finger, and Mohammad Haris is straight away gone for the review. LBW has been given in by against Dunit Vellalage by Alim Dar. It was an arm ball and he went for the sweep. Now we feel that there was probably glove in that, and which is why Mohammad Haris went for the review straight away. But he has moved on to 36 from 28. No, nothing as far as the overstepping is concerned. The foot is well inside the line. He's bowled from a wide angle, from left arm round the wicket, and it's been hit on the arm. It's been hit on the arm, but before that, did the ball take the outside edge? There is no rule which says that if you get hit on the arm, you cannot be given out. Maybe Harris has taken it because he felt that it was too high and it would have gone over the stumps. But hitting on the arm does not mean that you cannot be given out. So they'll now check for the ultra edge, whether the ball hit the bat before hitting him on the arm, as everyone is keenly looking at the giant screen. And here comes ultra edge now. No, nothing. The ball has not hit the bat. And now did it hit the glove? No, it's not hit the glove. It has hit the arm and just below the sweatband of Mohammad Haris. So that comes about the impact. And now they'll be looking to see where is the ball projecting. Is the ball projecting over the stumps, or is it going to hit the top of the stumps? It's going over. So very, very good review from Mohammad Haris. Normally, unless the batter has hit it, you don't see a batter signaling for the review so quickly, unless on basis of height. So here Mohammad Haris seemed to know that it hit me on the arm, so clearly it should be going over the stump. So that's a very, very good practical sense applied by Mohammad Haris. He did not even consult Kamindu Mendes even for a while. Now he's laughing, but I dare say that is a very, very good decision from Mohammad Haris. And Mohammad Haris and Acela Gunaratne just having a couple of quiet words, but those seem to be in good intent because both of them were seen smiling and laughing. Outside the off stump, driven through cover point for a single, 110 for 3. Haris moves on to 37 from 30. Yes, and that was a good friendly gesture shown by the bowler and the batter, because they went into conversation about the same thing that we were discussing, that he hit the arm, and that is why he thought that he might have just got that height factor into play, and that was the reason why he went for this review straight away. And talking about the batting approach of Harris, it has been a good positive approach, and he has played with all that courage required. What I'm talking about courage is, you get at first over in business, you were shattered with all your positive approach, but then on it has been a scoring arena. Now it is 111 for 3. We are into the 13th over, and Dunit Vellalage has bowled decently, but now again it's an appeal, and now is it the impact outside the off stump, and will it go for a review? They have gone. Yes, they have taken the review here. Second time in this over, Mohammad Haris has been struck in front of the stumps. This was a spinning delivery. It pitched outside the off stump. It went into the right hander, and we have to see whether this is trouble
or The question it- is the impact. Where was the yes, impact? Impact is a big question. Was it outside the off stump? Yes. I know. It's Yes, you not- can see all the yes, three it is. stumps. It is outside the off stump, but it is hit him In the main everywhere except for the pads and the legs. Now straight into the belly it went. And a few days back, we had a photo of Nicholas Puran on the net showing the bruises that he got. One from Arshdeep and second from Brandon King. Yeah, So, because Brandon King hit a ball and it hit him straight. Yeah. that was a brutal of a photo for Nicholas Puran to be put on the social media. But here it is once again struck in front of the stumps. But now, will that review be upheld or will it be a loss? Now, impact outside the off stump. That is couple of greens. Review lost. 12.5 overs. 111 for 3. Come on. You get carried away. Sometimes you get carried away by the accuracy of the bowler as well. 13 overs done. 112 for 3 are the wheel of Kandy. All that glitters is not gold, and just because the bowler is honest doesn't mean whatever he says is bound to be true. Time to ponder for Thisara Pereira and his team as to how can they get Jaffna back into this game. For now, 13 overs, 112 for 3. They might probably be staring at something in excess of 180. Can they make a turnaround? We'll know after the strategic break. We'll be right back. Welcome back after the break. 111 for 3 are the Beal of Kandy. Now this is chipped in here. Has it gone all the way? That is a stunning shot from Mohammad Haris.
exposes all his 3 stumps to Asera Gunaratne, treats him as a leg spinner, and then lofts it with the turn over extra cover for half a dozen. Well, tell you what, this guy, if he can get on song, he can make the bowler and the fielders dance to his tunes. Well, he seemed to be struggling for the first 10 overs of this innings, but after that, he seems to have come onto his own as Mohammad Haris. This has been a wonderful, wonderful exhibition of batting so far. Now the other side, it has... No, just... Oh, in fact, he finds the boundary as well. The leg spinner again from Asera Gunaratne, this time outside the off stump. On this occasion, Mohammad Haris does not go inside out. He gets across, takes it, plays it against the turn and plays the slog sweep wide of long on. And the fielder thought, I think it was Vella Lage who thought he could get to the ball, but once the ball pitched, it just shot and spun away to his right. And now, well, in a span of 2 balls, the run rate has just rocketed up. 122 for 3 now, and now 180, 190 looks definitely on the cards. Yes, 180, 190 surely on the cards with this kind of an approach from Mohammad Haris and Kamindu Mendes getting into this act. Pretty ordinary piece of bowling now by Gunaratne also, because he was good to go. And now in that while Haris gets his half century in 36 deliveries. Quite matured innings, quite an innings of caliber, and a innings where everybody wanted to applaud for him. $124 for 3, and this is a time where you would think, as a batter, I am going to face the last ball of the 20th over as well. Because if at all you want to get to a big score, these are the sixes that are required. Long, huge, humongous to end the 14th over with a 6 towards the Cow Corner region. 130 for 3. The Kandy team 56 to Haris. And 2 wickets for 41 in 4 overs for Gunaratne, who started off very well but was expensive towards the end of the spell. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे। आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी। Right, and it's 130 for 3. Make that 131 for 3. It should be, because it is a short ball down the leg side, and Kamindu Mendes has just tucked it around the corner towards square leg. And Gunaratne, well, life comes a full circle, doesn't it, in this match? First over started off with a bang, conceded 3 runs in total, but 2 runs to his kitty. And then the next 3 overs going for 39, 18 of which coming in that last over itself. 2 stalwarts, Pakistan stalwarts. In fact, plenty of Pakistan stalwarts out there in the stadium, I would say. In the Kandy dugout, we have got Mushtaq Ahmed, who is also one of the coaches of the Kandy team. And in the stadium in particular, we have got the great Javed Miandat and Wasim Akram just out there supporting the cricket. And they would be very happy. Maybe in terms of this match for Kandy, but overall from Pakistan's point of view, for Wasim Akram and Javed Miandat in particular, that a gem has been unearthed for Pakistan, and he played a crucial role in the T20 World Cup as well. He was very well until that final.
that final against England, where England just overpowered Pakistan in the 2022 World Cup final. But having said that, he's a very, very good player and has got a lot of potential and something which we have seen on display. Now, well, it's Dilshan Madhushanka, beg your pardon, who's come back into the attack. He was the one due to which the momentum completely swung in favor of beloved Kandy. Jaffna started off really well in the first 2 overs, but the captain's decision, Thisara Pereira's decision to go to Dilshan Madhushanka for no reason in the 3rd over of the match, well, completely changed the perspective. Now it's 133 for 3 in 14.2 overs. What could have been had Nuwan Tushara been given that 2nd over in the 3rd over of the match itself? Left arm over the wicket to the left-handed Kamindu Mendes. Oops, comes down the track and he's bowled a high full toss. The catch will not be taken, but will this be given a no ball? Asira Gunaratne collects it on the bounce at 3rd man, deep 3rd, beg your pardon. And well, the square leg umpire is indicating that the ball was dipping as Kamindu Mendes came down the track. I feel that is a bit harsh. I think that was a bit harsh, and Kamindu Mendes is actually saying that, what are you saying? He's saying that he came down the track and I'm taking it beyond my shoulder height, and Alim Dar is laughing behind him. And well, we'll have to wait and see. No, I think that is a bit harsh. That is a bit harsh on Kamindu Mendes. He has played it around shoulder height, even though he was halfway down the track. I don't think that would have dipped good enough, well enough to go below the waist. And now Mohammad Haris becomes very cheeky, gets across his stumps and laps it over short fine leg to get another boundary. His 6th boundary. He moves on to 61 from 40. Kandy are rollicking along now, 138 for 3 with 32 balls left. Do you need some help from the extras? If you're having a Mohammad Haris in your team batting so well, even if you ask him to play blindfolded, he'll say, how many runs do I need to get blindfolded? So this is the kind of momentum that he's built. He's laughing on everything because he's playing the shot and then realizing, oh, did I play that really? And all of a sudden, it's an 8-run over in the first 4 deliveries, 3 singles, then 1 wide, and now a boundary. So a good looking over in shape, because every bowler is now being treated as an ordinary person on the field. Now once again, very close to the body was the delivery, and he wanted to get it towards the deep 3rd, but he just managed to get it towards the wideish first slip that was in place. It is 32 runs that have been conceded by Madhushanka, and he's yet to finish his 3rd over. 139 is the score for the loss of 3 wickets in 14.5. Mohammad Haris has a good chance of making it to the 3 figures mark here. As many as 5 overs remain after this delivery. So if he gets majority of the strike, and he's striking the ball well, because he was a slow starter kind of. Then he was a supporting role to Dinesh Chandimal when they were both batting together. And now way outside the off-stump line. Will it be? Yes, it is signaled as a wide. So 140 on the board before we end the 15th over. Still a ball remains in this over. And Angelo Matthews is now on his feet, just getting ready. If at all there is a fall of wicket, we see him coming. And he's a big man, but he is not a big hitter. He needs some time in the middle, and now he's not got that adequate time to get settled, because only 5 overs remain after this delivery, and 140 can be transferred to, say, even 200 if they get some good. Now once again a wide. He's not trying to end the over. Just bowl near to the batter. Nothing else needs to be done. See, you have considered a couple of runs. If you get hit for a boundary, it will be a big over to finish, actually, because in these situations when you are losing on the line and length, you're losing on the momentum, just close your eyes and say anything but on the bat, under the bat, near to the batter, no extras. What is the maximum that can come? A sixer, nothing apart from that. Now he's played it, chipped it towards the long on region for a boundary to end the over. Beautifully played, that is 145 for 3 in 15 overs. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे।
आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी ऐसी बातें बताएंगी जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख चलिए, आखिरी 5 ओवर क्या होने वाले हैं। ये 5 ओवर में क्या यहाँ पर 200 भी पहुंच सकती है? क्योंकि अगर 10 रन प्रति ओवर भी खेले जो नॉर्मल है आखिरी 5 ओवर में उतना स्कोर करना, तो 195 तो ऐसे ही आ रहे हैं। और ये टाइमिंग की सराहना करनी होगी मोहम्मद हारिस की, क्योंकि जब ये आउट हुए थे वनिंदो हसरंगा, तब ऐसे लग रहा था कि टीम मुश्किल में है, पर वहां से उन्होंने जो काउंटर अटैकिंग शुरू की है, वो काउंटर अटैकिंग की टाइमिंग की वजह से यहाँ पर कैंडी को एक मोमेंटम शिफ्ट मिल रही थी, लेकिन महेश तीक्ष्णा ने आकर एक बार फिर से यहाँ पर उस मोमेंटम शिफ्ट पर ब्रेक लगा दी है। हालांकि जिस बैट्समैन की विकेट की उनको दरकार थी वो उन्हें नहीं मिली, लेकिन चलिए, वो विकेट नहीं मिली तो भी क्या हुआ, एक अच्छी साझेदारी जो पनप रही थी उसे तोड़ दिया, क्योंकि ये साझेदारी हो गई थी 55 रनों की और सिर्फ 6 ओवर से भी कम उन्होंने गेंदों का सामना किया था कमिंदो मेंडिस ने। और शायद मोहम्मद हारिस ने भी उन्हें कहा था कि चलिए, अभी तो हम अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए हैं, हम तो सोच रहे थे 150, लेकिन अभी हम यहाँ से 200 भी पहुंच सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी मारेगा तो नहीं चलेगा, हमें दोनों एंड से मारने होंगे। शायद उसी रीजन की वजह से कमिंदो मेंडिस ने बहुत ही एडवांस में अपने तीनों स्टंप्स दिखा दिए और महेश तीक्ष्णा ने सिर्फ जैसे वो नॉर्मली गेंदबाजी करते हैं, सीधा स्टंप्स पे डाली गेंद और लेग स्टंप उड़ाकर ले गई गेंद, क्योंकि कैरम बॉल थी, गेंद काफी फास्ट आई और बैक अवे करने की कोशिश कर रहे थे कमिंदो मेंडिस इनसाइड आउट मारने की, लेकिन चूक गए। और एक और पाकिस्तान की जोड़ी अब साथ में बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि आसिफ अली आए हैं नंबर 6 पर। मैं यही कह रहा था कि एंजेलो मैथ्यूज का जितने ओवर्स कम होते जाएंगे उतने एंजेलो मैथ्यूज की बैटिंग जो है आने के चांसेस और कम हो जाएंगे। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर 2 ओवर के बाद अगर विकेट गिरता है तो फिर इसुर उड़ाना आ जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि वैसे होता है, यू प्ले एज पर द टाइम। यानी अगर वो बेटर स्लॉगर हैं जो इसुर उड़ाना है, जो सिक्सेस मारते हैं, तो नॉर्मली यू वुड प्रेफर इसुर उड़ाना, क्योंकि आप एंजेलो मैथ्यूज से वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो पहली गेंद पर आकर रन स्कोर करे। और तीक्ष्णा की पहली गेंद पर एक सिंगल ले लिया है माफ कीजिएगा, आसिफ अली ने हल्के हाथों से खेल दिया बॉलर के दाएं तरफ और यहाँ पर 1 रन अपने नाम कर दिया। 147, 4 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर बी लव कैंडी। चौथी विकेट तो बहरहाल एक बोनस के रूप में आई है, क्योंकि स्लॉग ओवर शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर अगर आप विकेट लेते हैं तो आपको कितना फायदा होगा, ये बॉलर्स ने भाप कर बिल्कुल महेश तीक्ष्णा ने एक सटीक गेंद डाली और चारों खाने चित्त कर दिया कमिंदो मेंडिस को, जो अच्छे लग रहे थे, एक अच्छे लय में आने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा एक पार्टनरशिप उन्होंने निभाया था इसका मोहम्मद हारिस के साथ, लेकिन अभी भी समय नहीं बिगड़ा है, अभी भी मोहम्मद हारिस को साथ देने आए हुए आसिफ अली भी जुड़ सकते हैं रन स्कोरिंग के इस बड़े से मौके पर। और अगर उन्होंने इस पारी में एक अच्छी शुरुआत तुरंत लेकर कम गेंदों में बहुत ज्यादा रन बनाए तो 200 का आंकड़ा बिल्कुल पार हो सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि क्या होगा अच्छा स्कोर, तो 200 एक मानसिक आपको एक ये देता है, बल देता है, आप प्रेशर में डाल सकते हैं, क्योंकि पहली गेंद से आपको प्रति ओवर 10 रन
की जरूरत होती है जब भी आप 20 ओवर में 200 का आंकड़ा छूने की कोशिश करते हो। यहाँ पर एक बहुत ही सीधी जाती हुई गेंद, दी अदर वन जिसे कहते हैं, एक बहुत ही बढ़िया गेंद अपनी ओवर समाप्त करने को 16 ओवर के पश्चात 150 पर 4 है बी लव कैंडी टीम। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगी जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए? 153 4 विकेट के नुकसान पर और थोड़ी बहुत किस्मत यहाँ पर बी लव कैंडी के साथ रहती हुई, क्योंकि एक धीमी गति की गेंद थी यहाँ पर नुवन तुषारा की और उस पर प्रहार करने का प्रयास किया आसिफ अली ने, लेकिन गेंद ने बल्ले का भारी सिरा लिया और हवा में काफी देर रही थी, लेकिन जब वो नीचे आई गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण तब वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था कैच लपकने के लिए। तो 2 रन यहाँ पर ले लिए बी लव कैंडी ने 153 4 विकेट के नुकसान पर और एक और धीमी गति गेंद, और अगर ये छोड़ देते तो यहाँ पर आराम से वाइड मिल जाती आसिफ अली को। लेकिन हम एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचे, एक ऐसे स्टेज पर पहुंचे हैं जहां पर बल्लेबाज को लगता है कि मैं क्यों छोड़ू, अगर मेरे पास मौका है उस गेंद पर प्रहार करने का तो मैं क्यों ना करूं प्रहार। 154 4 विकेट के नुकसान पर बी लव कैंडी। और यहाँ से बिल्कुल एक अच्छी सिचुएशन पे जाना होगा, क्योंकि अगर आप स्कोर नहीं करेंगे ना, ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है फिर आपको डिफेंड करते समय, क्योंकि एक प्रेशर सिचुएशन में कोई भी टीम कैसा खेले आपको नहीं पता चलेगा। और यहाँ पर एक हवाई फायर कर दिया है, क्या बाउंड्री! बिल्कुल मैं कहने वाला था कि क्या 6 रन होंगे या 4 रन, 4 रन यहाँ पर मिल गए हैं और बहुत ही अच्छी लय में यहाँ पर मोहम्मद हारिस अपने आप को ढाल रहे हैं। 69 पर पहुंच गए हैं, 45 गेंदों में 158 है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। बी लव कैंडी जिन्हें न्योता दिया गया है पहले बल्लेबाजी करने का, अगर यहां पर ये 200 बना लेते हैं कार्तिक जी तो ये गलत डिसीजन हो सकता है पहले गेंदबाजी करने का, क्योंकि कितना आप अपने आप को कितना संयम रखेंगे, कितना आप अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे। मार तो आपको यहां पर पड़ चुकी है, यहां से आप सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं कि कब हमने ये 20 ओवर खत्म करने हैं और कब हमने एक अच्छा सा स्कोर जो बनेगा यहां पर वो चेस करना है। बिल्कुल एक मोमेंटम शिफ्ट होता है ना, पहली ओवर सिर्फ वो याद आ रहा है, पहली ओवर का खेल जहां पर अनप्लेएबल, ये आखिरी बार हमने तभी यूज किया था वर्ड, उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं उसको, अनअवॉइडेबल सिचुएशंस में पहुंच गए हैं यहां पर जाफना किंग्स। और देखिए आप कहते हैं ना कि हमेशा इतिहास जो है वो खुद को दोहराता है, इतिहास जो है ये खुद को ऐसी स्थिति में ला रखता है जहां पर उसे एक नया पन्ना भी जुड़ सकता है। ये वो कगार है या ये वो क्षण है जहां पर वो नया पन्ना जुड़ सकता है। क्या जाफना अगर नहीं कर पाई तय ये सफर इतने रनों का, जब चेस करने आएंगी तो शायद इस जैसे
2019 में हुआ था, पहली बार 2 नई टीमें वर्ल्ड कप विश्व कप में 2019 में, ये बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन हो सकती है पर वो दौर थोड़ा सा दूर है, संडे तक रुकना होगा उसके लिए। एक टीम तो हमें पता है जो गई है फाइनल्स में, लेकिन एक टीम के लिए और एक मैच जरूरी है इसके बाद भी। तो देखते हैं क्या हशर होता है इस अच्छी से पारी का इस पूरी मैच पर। 73 पर खेल रहे हैं 46 गेंदों में और एक डॉट बॉल के साथ 17 ओवर की समाप्ति। 163 पर 4 हैं व्हील ऑफ कैंडी। हैरिस के 73 रन आज याद दिला रहे हैं उस पहली पारी के 80 रनों का जो बनाए थे क्रूसपुले ने। बहुत ही एक एक्सर्टेड पारी थी, क्योंकि जब याद आता है उस पूरी पारी के स्कोर बोर्ड में, उस स्कोर कार्ड पे 80 के बाद सीधा 19 आया था। तो दुख होता है ऐसे बल्लेबाजों के लिए। और जब मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर आप जीते नहीं जीते, आप हारे नहीं हारे, आपका नाम लिया जाएगा, और इसीलिए मैंने दोहराया क्योंकि वो एक उल्लेखनीय पारी थी। ये बहुत ही हसीन पारी थी जो अनेक युवाओं को प्रेरित करेगी कि आप किसी भी सिचुएशन में रहे, अगर आपको अच्छा खेलना आता है तो आपको अच्छा ही खेलना पड़ेगा। आप बुरा खेल ही नहीं सकते, चाहे कोई आपका साथ दे नहीं दे। अगर आप सही हो तो आपको आपका गेम निखरना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक छक्के के साथ स्वागत किया है तीक्ष्णा का। 18वीं ओवर में आखिरी ओवर करने आए आपने स्पेल की तीक्ष्णा, और पहले ही गेंद पर हवाई फायर बिल्कुल तीखी ही लगी होगी, क्योंकि ये इतनी ऊंची गई थी कि नीचे आते आते भी थोड़ी सी उनको खटास भी लगी होगी। फिर एक बार वही स्लॉग करने की कोशिश, स्विंग एंड मिस, बिल्कुल स्विंग एंड मिस के पोजीशन में थे ही, क्योंकि वो बॉल थोड़ी सी पहली जो थी वो अंदर आ रही थी, दूसरी थोड़ी सी बाहर जा रही थी, तो देखा नहीं उन्होंने। पिच जहां पर हुई थी वही हुई थी पिच इस बार भी। तो 2 गेंदें हो चुकी है 18वें ओवर की, और ये फुल टॉस। तीसरी गेंद क्या होगी, कैच नहीं, ये खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, और एक सिंगल ले लिया है। 170 हो चुका है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। और अगर यहां से 11 रन के अनुमान से जाते हैं तो 198 बनेंगे, जो करंट रन रेट है उसके हिसाब से 194, लेकिन कहीं ना कहीं 200 का आंकड़ा छूने की मंशा तो जरूर होगी। और ये खेल दिया है, पटकी हुई गेंद थी लॉन्ग ऑन की तरफ। एक फील्डर तो थे लेकिन वो बन गए हैं दर्शक, और 79 पे पहुंच गए हैरिस उस 6 रनों की बदौलत। ये दूसरा हवाई फायर इस ओवर का। 13 रन आ चुके हैं पहले 4 गेंदों पर। जी हाँ, 13 रन आ चुके हैं पहले 4 गेंदों पर। और हम लसित क्रूसपुले के बारे में बात कर रहे थे कि वो सेंचुरी नहीं बना पाए। क्या यहाँ पर मोहम्मद हरीस के पास मौका है, क्योंकि इसके बाद 2 ओवर शेष हैं और वो सेंचुरी तक पहुंच सकते हैं। अब नहीं पहुंच सकते क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी चहलकदमी कर दी थी। आगे आकर चार्ज किया महेश तीक्ष्णा को, और तीक्ष्णा ने एक सटीक यॉर्कर डाल दी। जी हाँ, एक यॉर्कर डाल दी, और अच्छी कीपिंग यहाँ पर कहना पड़ेगा रहमानुल्लाह गुरबाज। उन्होंने एक आसान सा स्टंपिंग मिस किया था, और वो मोहम्मद हरीस का ही था मेरे हिसाब से। बहुत पहले तीक्ष्णा के ही बॉल पर, शायद 4-5 ओवर में था वो, 5 ओवर में था जब उन्होंने स्टंपिंग मिस की। और ये गणित मैच नहीं करता, 5 ओवर में विकेट गिर सकता था। अभी 18वीं ओवर में जाकर मोहम्मद हरीस का विकेट गिरा है, और अच्छी कीपिंग यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज की। उन्होंने कलेक्ट किया और फिर बेल्स को उन्होंने निकाल दिया। एक बहुत ही बढ़िया पारी मोहम्मद हरीस की। 79 रन 49 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से। शायद बहुत जल्दी हो जाएगा ये, पर ऐसा मेरा दिल कह रहा है कि शायद ये एक मैच विनिंग पारी हो सकती है, और उसके लिए हम इन्हें एक तालियों की गड़गड़ाहट जरूर देना चाहेंगे। अचंभा इसके लिए क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी जब 13 गेंदे शेष है। और नहीं, हम उनका अपमान नहीं कर रहे, हम सिर्फ सरप्राइज थे कि आपको ऐसे टाइम पर ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो बड़े बड़े हिट्स लगा सके पहली गेंद पर चलिए, अगर आपके पास महेश सांता क्लॉज तीक्ष्णा है तो फिर
आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहली गेंद पर उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को एक क्रिसमस गिफ्ट दे दिया है डाउन द लेग साइड, एक फुल टॉस, और एंजेलो मैथ्यूज ने उसे क्लिप कर दिया है शॉर्ट फाइन लेग के बाएं तरफ से 4 रनों के लिए। तो एक बहुत ही महंगा ओवर यहाँ पर बीतता हुआ महेश तीक्ष्णा के लिए। उन्होंने विकेट जरूर लिया मोहम्मद हरीस का, लेकिन 17 रन भी दिए। 4 ओवर 37 रन और 2 विकेट यहाँ पर महेश तीक्ष्णा के फिगर्स हैं। और कैंडी का स्कोर 18 ओवर के बाद 180 पर पहुंच गया है 5 विकेट के नुकसान पर, 17 रन उस ओवर में आते हुए। और अब जो है बी लव कैंडी काफी नजदीक पहुंच गई है 200 के, यानी 20 रन चाहिए, 2 ओवर शेष है। और अगर हम ओवर ब्रेकअप्स की बात करें तो पावर प्ले में आए कैंडी के लिए 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और मिडिल ओवर्स में भी उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। 87 रन उन्होंने बनाए उस मिडिल ओवर के पीरियड में 9 ओवर में, और सिर्फ 2 विकेट खोए। और अभी फिलहाल जो यहाँ पर गेम चालू है 3 ओवर में, यानी डेथ ओवर्स के 3 ओवर में उन्होंने 35 रन बनाए हैं और विकेट खोए हैं सिर्फ 2। लो फुल टॉस, ऑफ स्टंप के बाहर आसिफ अली का प्रहार करने का प्रयास, लेकिन प्रयास असफल रहा। और यहाँ पर एक डॉट बॉल, एक क्लोज डॉट बॉल। और इस टूर्नामेंट में जाफना ने एक भी बार 180 का आंकड़ा पार नहीं किया है, लेकिन जैसे कि तिसारा परेरा ने कहा, व्हाट इज पास्ट इज पास्ट। हम लीग स्टेज के बेसिस पे हाँ, आप लीग स्टेज के बेसिस पे एलिमिनेटर में आए जरूर हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो गेम आपने लीग स्टेज में दिखाया हो वही सेम गेम आप एलिमिनेटर में दिखाओ। लेकिन कैंडी ने अपने हिसाब से काफी अच्छी यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। वो चाहते, अगर वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते तो वो सेकंड, वो एक्चुअली क्वालिफायर 1 खेल रहे होते आज डम्बुला ओरा के खिलाफ, लेकिन खैर वो एक अलग बात है। वो यहाँ पर एलिमिनेटर खेल रहे हैं और उन्हें एक थोड़ी बहुत एक राउंड टर्न लेना पड़ेगा फाइनल में पहुंचने के लिए। तो बेचारे नुवन तुषारा पहले ओवर में 2 रन और उसके बाद अगले 2 ओवर में 35 रन, पूरी तरह से उनकी काया पलट होती हुई यहाँ पर। और अब 10 गेंदें शेष है, 181 5 विकेट के नुकसान पर। इन 10 गेंदों में किस तरह से क्या जाफना कोई कमबैक कर सकती है, या फिर बी लव कैंडी जो है इन 10 गेंदों में और प्रहार करेगी और 200 के पार निकल जाएगी। कई बार हमने देखा है कि जो आखिरी 10-12 गेंदें होती हैं उसमें भी कभी कभी मोमेंटम, कभी कभी तो आखिरी ओवर में भी मोमेंटम ऐसा शिफ्ट हो जाता है और रन चेज में आपको वहां पर मदद मिलती है। शॉर्ट गेंद पुल करने का प्रयास एंजेलो मैथ्यूज का, बिल्कुल भी उसमें पावर नहीं था और पता नहीं क्यों वहां पर चरित असलंका बॉल को अटैक ही नहीं कर रहे थे, पीछे गए बॉल को पकड़ने के लिए और 1 रन यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आगे आकर कैच पकड़ सकते थे, लेकिन उनकी एफर्ट थोड़ी अजीब लगी। 3 गेंदों में अभी तक सिर्फ 2 रन, 182 5 विकेट के नुकसान पर बी लव कैंडी। 9 गेंदे शेष, बिल्कुल 9 गेंदे शेष है। वो 18 रन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 200 अगर आप छू लेते हैं तो आपका एक मानसिक दबाव बन जाता है आपके प्रतिस्पर्धी पर, और वो चाहेंगे कि आसिफ अली और एंजेलो मैथ्यूज उनके लिए वो 18 रन बनाए। दोनों भी बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेलने में माहिर हैं। आप तो जानते हैं, सभी जानते हैं कि एंजेलो मैथ्यूज ने एक हाथ ही अपने टीम को जिताया है कई बार श्रीलंका के लिए जब खेलते थे। और उनका जो योगदान है इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका टीम के लिए वो आप झुटला नहीं सकते। और यहाँ पर उनके लिए बची है आखिर की 8 गेंदे, 2 गेंदे इस ओवर में शेष, और ये स्विंग एंड मिस आउटसाइड द ऑफ स्टंप पिच हुई थी और सीधा गई कीपर के हाथ में, मिस। ये डॉट बॉल, यहाँ पर 3 ही रन आए हैं। काफी हमने यहाँ पर लगभग हर एक गेंद का विवरण किया, लेकिन ये भूल गए कि इस ओवर में पहले 5 गेंदों में 3 ही रन आए हैं। तो एक अच्छी ओवर यहाँ पर फिंगर्स रोल कर रहे हैं उस बॉल के ऊपर, और डिलीवरी बहुत अच्छी पिच होकर कीपर के हाथ में जा रही है। अफसोस जताया उस मिस पर एंजेलो मैथ्यूज ने, लेकिन आखिरी गेंद और ये खेल दिया है कवर्स की दिशा में, शायद 1 रन होगा। 2 रन के लिए आएंगे, यस, दूसरे रन के लिए भी आ गए हैं। एंजेलो मैथ्यूज ने 2 रन की यहाँ पर प्राप्ति कर ली है। 185 पर 5 19 ओवर के पश्चात है बी लव कैंडी की। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगी जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी।
और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि जहां पे मैं रह रहा हूं वहां पे मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो शायद मुझे वो मच्छर वाली बैट लानी चाहिए और उन मच्छरों को मारना चाहिए, जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्वॉटिंग। और बिल्कुल वही शॉट खेला यहाँ पर मोहम्मद आसिफ ने। आगे आए, छोटी गेंद थी, धीमी गति की नुवन तुषारा की, आगे आकर उसे मच्छरों के बैट से प्रहार करने का प्रयास किया, मतलब जितने जैसे स्वॉटिंग कहते हैं इंग्लिश में, और पूरी तरह से चूक गए और अगले गेंद पर वो अपना विकेट भी गवा बैठे हैं। धीमी गति की गेंद एक बार फिर से नुवन तुषारा की शॉर्ट गेंद, आसिफ अली ने पुल करने का प्रयास किया लेकिन चूक गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया और डीप मिड विकेट की तरफ चली गई। गेंद में ऊंचाई ज्यादा थी, दूरी कम थी, और जब नीचे आई तब डेविड मिलर खड़े थे वहां पर कैच पकड़ने के लिए। और जैसे कि हम सब जानते हैं, डेविड मिलर चाहे कितने भी खराब फॉर्म में क्यों ना हो, फील्डिंग में कभी भी खराब फॉर्म में नहीं रहते, एटलीस्ट हमने तो नहीं देखा है। और मुझे नुवन तुषारा के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उनकी तो कोई गलती है नहीं और वो बेचारे थोड़े रिलीव्ड लग रहे हैं। उन्हें ऐसा लग भी नहीं रहा है चलिए मुझे एक दूसरा विकेट प्राप्त हुआ है, पर क्योंकि उन्होंने जो पहला विकेट लिया था वो अपनी दूसरे गेंद पर लिया था और तभी स्कोर कुछ अलग था और अभी स्कोर कुछ अलग है। तो लास्ट कुछ ओवर्स में थोड़ी बहुत मोमेंटम यहाँ पर जाफना किंग्स के लिए, क्योंकि पिछले 8 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 5 ही रन दिए हैं और 18 ओवर में 180 पे 5 थी यहाँ पर कैंडी। तो पिछले 8 गेंदों में सिर्फ 5 रन और 1 विकेट, और अभी भी सुर उड़ाना नहीं आए हैं। ये शायद सहान अरच्छिगे हैं जो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। तो काफी, और इनका 50वां मैच है T20 में, तो बधाई हो उनको। और ये उम्मीद करेंगे कि अपने 50वें मैच में बल्ले से तो नहीं पर गेंद से कुछ कर दिखाए और ये मैच जो है अपने आप के लिए यादगार बना दे। 185 6 विकेट के बाद और अब 186 पे हो जाती है क्योंकि गेंद हवे में है लॉन्ग ऑन की तरफ। ओ कैच हो सकती थी, मुझे लगा लॉन्ग ऑन के आगे जाके गिरेगी गेंद, लेकिन असेला गुणारत्ने ने हाथ में आए हुए कैच को पुरस्कार की भांति वापस दे दिया है सामने वाले खेमे को। आगे आए, कैच लपका और बॉल जो है वैसे ही, गेंद जो है वैसे ही नीचे भी गिर गई। कोई रीजन नहीं है, कोई खिलाड़ी जानबूझ के कैच तो छोड़ता नहीं है, पर इसका एक्सप्लेनेशन मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सेटल किया था खुद को उस बॉल के लिए और मतलब बॉल आ रही थी वो आपके दिशा में, आपने सेटल किया आप एक क्षण में, और आपको ज्यादा समय नहीं मिलता एक्चुअली। आप जब भी फील्डर के रूप में होते हो, बाउंड्री लाइन पर खड़े होते हो, यहाँ पर बिल्कुल ये मिस टाइम शॉट है एंजेलो मैथ्यूज, और इस बार थिसिरा परेरा बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे अपने दोस्त की कैच लेने पर। वो बिल्कुल ही खुशी जताएंगे क्योंकि यहां पर 6वीं विकेट का पतन होता हुआ 7वीं विकेट का पतन होता हुआ 186 पर 2 गेंदें बची हैं अभी, और उस 2 गेंदों में क्या कर सकते हैं जो नए बल्लेबाज आएंगे, क्योंकि अगर आपने ये मकाम हासिल किया है 198 का 186 का, क्षमा करें 186 का, तो आप अब तो आप नहीं सोचेंगे 200 के बारे में। 2 गेंदें ही बची हैं, थोड़े से टेल एंडर है। ये जो पिछले 10 गेंदें गई हैं, आपको लगता है? मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये कितना ठहराव आ गया है। देखो कितने 10 गेंदों में आपने कितने रन देखे, 3 2 5 एक 6 रन और 2 विकेट। 18 ओवर में 180 पे 5 थे बिल्कुल, और इस 6 रनों में आपने 2 विकेट भी गंवाया, जबकि आपके इस आखिरी 12 ओवर में कम से कम 20-25 रन होने चाहिए थे। तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ एफर्ट्स कह सकते हैं और लैक ऑफ एप्लीकेशन कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी निराशा होगी वी लव कैंडी टीम के लिए। लेकिन दूसरी एक पॉजिटिव टीम जो मैं इस दरमियान बोलना चाहता हूं कि आप एक समझिए, आपने 186 बनाए हैं, ये कोई कम स्कोर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आप ये मैच 186 या 190 डिफेंड करते हुए हार जाते हैं
तो आपको सिर्फ खुद को ही कोसना है, आप किसी और को नहीं कोस सकते, क्योंकि एक बॉलर 186, अगर एक बॉलिंग यूनिट अच्छी है आपकी, तो आप बिल्कुल भी उस टीम का हिस्सा होते हुए वो डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर आप मतलब अच्छा नहीं खेलेंगे तो यहाँ से बाहर जाएंगे, उस डर से तो आपको जीतना ही पड़ेगा। तो ये बिल्कुल 2 रनों का इजाफा यहाँ पर खेलते हुए, एक सीधी गेंद थी, मारने की कोशिश तो थी बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन 2 रन ही मिले जहां पे उन्होंने खेल दिया है। और यहाँ पर देखते हैं कैसा होता है माहौल आखिरी गेंद का। ये खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, कैच होगा, हाँ बिल्कुल थैंक यू बोल रहे हैं। और ये पारी की समाप्ति विकेट के साथ, 8वीं विकेट का पतन यहाँ पर 188, 8 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था बीलव कैंडी टीम को, और उसमें उन्होंने 188 का एक विशाल का स्कोर तो खड़ा कर दिया है। देखते हैं इसमें कैसे होंगे वो रन जो बने। 79 रन बनाए मोहम्मद हारिस ने, पहले ही आए थे फकर जमान। एक बहुत ही अच्छी गेंद का शिकार हुए तुषारा की, और समझ में नहीं आया कि दूसरी ओवर क्यों नहीं दी गई तुषारा को। दिनेश चंडीमल अच्छे दिखे, एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी हारिस और चंडीमल में। 51 रनों की, शायद 68 रनों की उन्होंने एक अच्छी साझेदारी की। 41 बनाए 24 गेंदों में दिनेश चंडीमल ने। वनिंदु हसरंगा आए, 19 रन बनाए, एक स्टार्ट दिया, आउट हो गए। कमिंडू मेंडिस आए, 17 रन बनाए, आउट हो गए। आसिफ अली आए, 15 रन बनाए, आउट हो गए। तो ये बीच का जो सेशन है ना, जहां पे स्टार्ट्स मिले लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए, और बाद में एंजेलो मैथ्यूज 7 रन बनाकर आउट हो गए। सहन अरिचगे वो आउट हो गए, 1 रन नहीं, ये नाबाद रहे 1 रन पर। और इसरू राणा ये आखिरी विकेट जो गई, 2 रन उन्होंने बनाए अपने लिए। लेकिन एक 188 का स्कोर भी अच्छा स्कोर है, आपने प्राप्त किया है। 7 अतिरिक्त आपको रन मिले, लेकिन वो जो पारी 2 लोगों ने खेली, 41 खेले दिनेश चंडीमल ने और 79 खेले मोहम्मद हारिस ने, एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट देती है कि चाहे पिच कैसा भी अपना कार्य करे, हमने यहाँ पर बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन कर दिया है। 188 8 विकेट पर। और बॉलिंग की बात करें तो हम यहाँ पर ये डेफिनेटली कहना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ प्रश्न चिन्ह हैं, कुछ प्रश्न हैं जो तिसारा परेरा को, जिसके जवाब जो है तिसारा परेरा को देने होंगे। सबसे पहले तो जब पहले ओवर में यहाँ पर तुषारा ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की, तो उन्हें तीसरा ओवर क्यों नहीं दिया। और फिर एक जो 5 ओवर में मोहम्मद हारिस का स्कोर था तभी 12 पे विकेट कीपर जो है रहमान गुरबाज ने एक स्टंपिंग मिस किया था महेश तीक्ष्णा की गेंदबाजी पर, और वो उन्हें बहुत भारी पड़ गया। बट हाँ, ऐसी चीजें होती है। बट मेन उनकी जो थॉट प्रोसेस थी, पहले 4 ओवर में 4 बॉलर, नुवन तुषारा, महेश तीक्ष्णा, दिलशान मधुशंका, दुनीत वेल्ला लगे, और इस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगा 7-8 बॉलर गेंदबाजी करेंगे, लेकिन टोटल में सिर्फ 5 ही गेंदबाज यूज हुए। और तीसरा प्रश्न ये कि वो खुद क्यों नहीं गेंदबाजी करने के लिए आए, क्योंकि तिसारा परेरा टीम में आए थे, लंका टीम में एक ऑलराउंडर बन के, यानी बॉलर और गेंदबाज पर, बल्लेबाज पर पता नहीं क्या था। पर हावेवर नुवन तुषारा, उनकी फिगर्स थोड़े फ्लैटरिंग है, उनकी गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं थी। उन्हें पहले ओवर में 1 विकेट मिला और आखिरी ओवर में 3 विकेटें मिली, जिसकी वजह से उन्हें 4 विकेटें प्राप्त हुई। लेकिन पहले ओवर में सिर्फ 2 रन गए और आखिरी ओवर में 3 रन, और बीच के 2 ओवर में 35 रन गए, और जिनकी वजह से पूरा मैच घूम गया। महेश तीक्ष्णा आज अपने लय में नहीं लगे, 4 ओवर 37 रन 2 विकेट। दिलशान मधुशंका शायद रॉन्ग सिलेक्शन, 4 ओवर 43 रन कोई विकेट नहीं। दुनीत वेल्ला लगे अच्छी गेंदबाजी, 4 ओवर 25 रन और कोई विकेट नहीं। असेला गुणरत्ने पहले 3 ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, 3 ओवर में 23 रन दिए 2 विकेट लेकर, लेकिन आखिरी ओवर में, चौथे ओवर में उन्होंने 18 रन दिए और उनकी कुल अंक तालिका हुई 41 रन 4 गेंदों में 2 विकेटों के साथ। तो ये था एक बॉलिंग का समरी। वैसे अगर देखा जाए तो 189 बहुत ही बड़ा लक्ष्य है पीछा करने के लिए जाफना किंग्स के लिए। और आप एक ऐसी टीम के बारे में बात कर रहे हैं जो कहते हैं ना, पीछे के दरवाजे से अंदर आई है एलिमिनेटर में। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि इनका नॉकआउट्स में जो रिकॉर्ड है वो ये है कि 7 मैच में इन्होंने 6 नॉकआउट्स जीते हैं, और पिछले 3 वर्ष में जो लंका प्रीमियर लीग की खिताब है वो इन्हीं के पास है। क्या ये वर्ष पहली बार, क्या वो जो
प्रथा है वो जारी रहेगी, जहां पर वो अपने लगातार चौथी फाइनल में पहुंचेंगे, या फिर ये वर्ष इस बार पहली बार ऐसा होगा जहां पर हम जाफना किंग्स को फाइनल में नहीं देख पाएंगे। ये हमें पता चलेगा इनिंग्स ब्रेक के बाद, क्योंकि एक चीज है यहाँ पर ड्यू नजर नहीं आ रही है, पिच बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन एक चीज है कोलंबो में कि शाम के वक्त सेकंड इनिंग्स में बैटिंग और भी मुश्किल होने लगती है। तो हम जा रहे हैं इनिंग्स ब्रेक पर, लेकिन जाते जाते आपको एक मैच का अपडेट दे देते हैं, एक दूसरे मैच का, न्यूजीलैंड और यूएई में। ये न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत ही बड़ा टूर है, क्योंकि यहां से वो कुछ प्लेयर्स चुनने वाले हैं ओडीआई विश्व कप के लिए, और यूएई ने एक अच्छे बॉलिंग का प्रदर्शन किया है। ये मैच दुबई में हो रहा है और न्यूजीलैंड को 155 पर रोक दिया है। 155 में से 55 रन जो है टिम साइफर्ट ने बनाया, और बाकी जो बल्लेबाज है चैट बोस, डेन क्लीवर, मार्क चैपमैन, ये कुछ ज्यादा कर नहीं पाए और अंत में 150 जस्ट क्रॉस कर पाए हैं। लेकिन जवाब में कप्तान टीम सऊदी ने पहले ही गेंद पर एक विकेट चटका दिया है, और फिलहाल यूएई का स्कोर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या वो 156 के लक्ष्य का पीछा कर सकेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हम जा रहे हैं एक इनिंग्स ब्रेक कर, वापस जुड़ेंगे जब गेम यहाँ पर फिर से शुरू होती है। You are listening to Flash News, brought to you by Crickcom. Ladies and gentlemen, cricket enthusiasts from around the globe, welcome back to another exhilarating episode of Flash News. I'm your host Isha, and today, as always, we are here to bring you the most electrifying and captivating cricket stories straight from the heart of the action. So, get ready to immerse yourself in the whirlwind of cricketing news that's been making waves across the sporting world. Hold on to your hats because England's pace bowling artillery just got a major upgrade with the inclusion of none other than the sensational Gus Atkinson in the ODI World Cup squad. While Jofra Archer's absence is keenly felt, England's newest addition, Atkinson, shines a spotlight on the country's surging pace bowling prowess. This move is a clear testament to England's depth and determination in the fast bowling department. But, dear listeners, that's not all. We will be delving into the intriguing stories of the budding speedsters Turner and Tongue, set to make their mark in the upcoming T20 series against New Zealand. And what's more exciting? We're uncovering the unconventional selection strategies that are propelling these raw talents onto the grand international stage. Cricket fans, gather round because the echoes of Team India's T20I series loss to West Indies are still reverberating across the cricketing universe. But fret not, because none other than Ravichandran Ashwin has a powerful insight to share. He's tapping into the wisdom of none other than the legendary MS Dhoni, whose quote holds the potential to turn India's fortunes around. We will dissect this pearl of wisdom and dive deep into the concerning areas that the Indian team is addressing. From batting blues to tactical tweaks, we are breaking it all down to understand how Team India is planning to bounce back stronger than ever. All eyes are on the future of Sanju Samson in the Indian squad. Amidst opportunities aplenty, his inconsistent form is causing ripples of doubt. Reports are buzzing that Samson might just find himself on the sidelines, omitted from the ODI squad for the upcoming 2023 Asia Cup. But what's the story behind this potential omission? We will unravel the factors at play and peek into the reshuffling of the team composition as players return from the injury list. Brace yourselves for a roller coaster ride through the selection saga. Cricket enthusiasts, hold on to your cricket hats because we have got an insight-packed revelation from none other than former Pakistan captain Rashid Latif. He's casting his expert gaze on Virat Kohli's captaincy and the potential repercussions of his departure. Latif believes that if Kohli had continued as captain, India would be marching into the 2023 ODI World Cup armed with 100% readiness. But, my friends, it's not just about Kohli. Latif has some thought-provoking observations about India's batting order and how experimentation might have hindered their World Cup preparations. Now let's take a moment to reflect on Team India's recent T20I series loss to the West Indies.
While the outcome might not be what we hoped for, the cricketing sage Sunil Gavaskar has some words of wisdom that might just shift our perspective. He's making peace with India's performance, highlighting the power-packed T20 capabilities of the West Indies team. Gavaskar's message? There is no shame in losing to a team that's clinched two ICC T20 World Cups and boasts an impressive IPL track record. But don't just take my word for it. We will dissect his perspective and explore what this means for Team India as they gear up for the challenges ahead. Before we wrap up, fantasy team enthusiasts can now revolutionize their gaming experience with our Crickong app. Prepare to unlock the full potential of your team selection as our app provides a wide array of interactive features and expert predictions. Our esteemed analysts offer valuable insights and game-changing analysis, giving you a strategic advantage in the highly anticipated live matches. We emphasize the significance of considering multiple factors and making informed decisions to optimize your team's performance. Immerse yourself in the thrill of the game with our engaging live. Right, the chase begins. Angelo Matthews has the ball in his hands, and he'll be starting the proceedings for the beloved Kandy, and Chris Lynn is the batter who will be facing the first delivery of this chase of the second innings. Beautifully it is ended because 180 odd runs, to be precise, 188 runs on the board, and you expect your team to be into a good looking session to defend those, and when you are in a position to go and explore yourself, this is a situation. Charita Lanka and Chris Lynn are the two batters for the Jaffna Kings, and they will try to replicate what they have done in the previous editions by taking their team one step closer to the all-important final. And here, this is almost like a quarterfinals in context of this tournament, where the team losing this match will be out of this tournament, and the one who wins here gets another chance to throw a pebble at the trophy's chance tomorrow when they play the qualifier number 2. Always when you are into the groove of chasing 188 on a track which says difficult to chase runs, and when you are just in what do you say in that groove of a good looking chase. But the groove, what I want to say is you want to make a good start, and you want to get into a good stride all together in achieving those 188 runs against all odds. You have decided to field first, and now you're chasing 189 to win. When you do that, you will be the most confident people on earth. Yes, they are chasing 189. Angelo Matthews, the most experienced of the campaigners in the beloved Kandy team, has started the proceedings with the ball. He knows how to get things done right and in a right way. He'll not, be one sideline player. He'll like the opportunity to be taken on his own shoulders, and he is well equipped with all the skills that are required to be a street smart cricketer, and he will try to maintain his supremacy on the batters with his prominent and consistent disciplined bowling attack. This is the first over. The batters can take a while, but not more, because they don't have that many deliveries to try and make those trial and error methods into existence. What they have to do is quickly get adapted to the situation
and start hitting those deliveries out of the park in order to be in contention of the 189. And with what I say before I complete my sentence, it is a boundary to end the over towards the covers region. 6 for no loss after the end of the first over are the Jaffna Kings chasing 189. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Mujib-ur-Rahman comes to bowl the second over, and what a shot to get it almost inside out towards the covers. Chris Lynn will not allow any bowlers to settle if it is his day. And on a given day, he can be a match winner all on himself because he has got the experience, and now he almost has a license to go for the kill because Mujibur-Rahman, if at all he doesn't bowl to the disciplined line and length, he'll be just taken to the cleaners by both these batters. Charita Lanka and Chris Lynn, they form a very formidable opening pair for the Jaffna Kings team. And when I say that, they will be knowing how to pace the innings when they're chasing 189. Now he gets down on 1 foot and he holds it out in the deep mid-wicket region. And what a time to lose a wicket. He was looking a little dicey with his short selection, and now he holds out in the deep. First wicket going down for the Jaffna Kings team, and Mujibur-Rahman strikes gold in his first over. And I was taking that he will be charged heavily if he bowls some different line and length. For the time being, he has bowled perfectly, and the batter just holding it out in deep mid-wicket region. What a time to get a wicket. Asif Ali making no mistake. Charita Lanka departing for a single in 6 deliveries that he faced. A good start here from the bowlers of B-Love Kandy. Now there is some twist in the start itself because the target of 189 will just go a step away if you keep on losing wickets at regular intervals. Not a start that the Jaffna Kings would have expected, but nevertheless it is a wicket that has caused all the troubles now. 6 for 1 in 1.3, and Chris Lynn would be thinking of how to get out of this situation ASAP. New batter in is Rahmanullah Gurbaz, and he'll try to score because it was him who missed out on the stumping of the star batter Muhammad in the first innings, and where you lose your main role as a keeper and you tend to get your team in trouble. Now a straighter delivery outside the off stump. The other one going into the keeper's gloves, testing the batter's temperament in. It was Mohammad Haris who was given a lifeline from the missed stumping by Rahmanullah Gurbaz, but he has to make it count now. First counter-attack shot, and what a 6 over the bowler's head towards the side screen, and a 6 to start his proceedings in this innings. It is a most positive start for a batter because if at all he stays into the shackles, he'll be troubled. And now sensible defense by the batter, enabling him to end the over with a dot ball. It is 12 for 1 after 2 overs.
Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and that 6 has just given out a hint of what Rahmanullah Gurbaz is up to. 13 for 1 in 2.1. Angelo Matthews continuing with his second over. He's given out 6 runs in the first over that he bowled the first over of this second innings, where you are defending 189, but you know that if at all you do not strike gold in the first few overs, it's going to be a batter's galore all the time. And now just glanced towards the backward square leg region, where the fielder from the final leg region almost had a chase to do, but he dived, ball just staying away from him, and it was the square leg region in the deep which was guarded by a fielder. For 3 runs they just run quickly enough, and now it will be crystalline to face the coming delivery from Angelo Matthews. A good effort in the deep by Asif Ali, ensuring that a boundary is saved, a single run saved from his efforts. That was a good thing to see, for any young player watching this match, and also following this match. You need to know the emphasis that a saved run can have on this match, because it is a very important match, and what this will mean that you need to be very, very confident of whatever you are hitting. Because if that is mistimed, you can lose your wicket, and that can cause you to lose the match, and always be in that zone where you are not too far away from the run chase, because a good couple of overs in the middle by the bowlers can put you in splits of your thinking ability, and once you press the panic button, you will end up losing very, very badly. This is a good over, a good comeback by Angelo Matthews after being taken for 3 runs on the second delivery. It's given out 11 runs in the first 10 balls that is bowled. 17 for 1 is the score for the Jaffna Kings, chasing 118 and 172 required in 104. One of these batters have to just go berserk against the bowling, and they have to just be very, very confident of chasing those runs, because if you at all do not break the if you do not break the score into smaller parts, it is going to be very, 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 very difficult for you to see your team towards a W line. And the winning line is a very thin line between your thinking and your execution, where your thinking should be a part of your execution, and your execution should be in line with your thinking, because what you think in the dugout before you start the innings may not be implemented in the same manner it is done, because whatever you face in the middle is or can be exactly opposite of what you think. And now a little shuffling shown to the bowler, and he bowls a land delivery, and it gets a pasting
last ball of the over gets a 6 towards the deep mid-wicket region to end the over. 23 for 1 are the Jaffna Kings after 3, chasing 189. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled... Wanted to play this delivery towards the leg side, getting an outside edge, taking it towards a point region where there was a field of Fakar Zaman, and he was not able to get hold of it because he tried, he jumped and he dived to perfection, but the ball was traveling away from him. Mujibur-Rahman is asking questions of which there are no answers found from the batter's bat, and the boundary was there but not convincing one, and Chrislin knows that this is tricky. It is a tricky phase of play, as Mujibur-Rahman can do you a magical spell and you might fall prey to it. It can be a flighted delivery, a shorter trajectory. It can be a quicker one. It can be the other one round. And he has a mixture of all the deliveries that can trouble the batters at any given moment. But for the time being, it is just very, very comfortably placed for the Jaffna Kings, where it is just outside the off stump. It was straightened after it pitched, and a carom delivery to test the temperament of Rahmanullah Gurbaz. Wow, they know each other, and they know each other very well from the national side. And a dot ball towards the end of the over. I mean, this is the fifth delivery, but that is a good comeback by the bowler after being hammered for a boundary of the first delivery that he bowled. Mujibur-Rahman, he has conceded 10 runs in 1.5. Wow, a sweep. Not a sweep exactly, but a kind of a pickup shot that he played, and to end the over with a boundary is a habit for Rahmanullah Gurbaz. 32 for 1 in 4 overs are the Jaffna Kings. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong.
Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement... Welcome back, but it's not that kind of a welcome back which Jaffna would have been expecting, because Rahmanullah Gurbaz has lost his wicket in a mix-up. Full on middle and leg, Lynn squeezed it towards point, and Gurbaz had the non-strikers and wanted that single, but was sent back after a while. And Mohammad Haris, who is the wicket-keeper as well, just quickly got on the ball and threw it towards Isuru Udana, the bowler, and Udana did the rest. So, trouble now for the Jaffna Kings, 32 for 2. And now Chris Lynn walks out. Oh, sorry, beg your pardon. It's Dunit Vellalage who walks out to the middle. He'll be the non-striker since the wicket was fell at the non-strikers end. And Gurbaz actually played a momentum-changing innings, kind of 19 from 10, and he was kind of doing that role which Mohammad Haris did for the Beel of Kandy. But now, a mix-up, a big mix-up, and eventually, it results in the loss of a wicket. And Rahmanullah Gurbaz is furious with Chris Lynn. And this is why calling is very important. If the calling is not there, then you end up losing a wicket in the form of a run. Now there's another chance of a run out, and another mix-up. However, lucky is Dunit Vellalage, as he managed to get towards the strikers end. And again, I think this time, Chris Lynn is to be blamed, because he drove this ball to the right of Angelo Matthews at mid-off, and straight away started running. And Vellalage was ball watching. He was looking where it was the ball and set off very late. Angelo Matthews took that just wee bit of extra time to get up and return the ball towards the keeper. And by that time, A, he was throwing off balance, and B, Vellalage got enough time to get back into the crease. Few nervous moments for the Jaffna Kings. A loss here, and they are out. They are out of this tournament, and this will be the first time in 4 years that they have failed to defend their trophy. Well, they won it in 2020, they won it in 2021, they won it in 2022. They still have a long way to go in 2023, because even if they win tonight, it doesn't certify that they are going to win this tournament, but at least they are alive. A loss definitely relegates them out of the tournament. 34 for 2 as another single is pinched now. Vellalage is off the mark, and what an over this is from Isuru Udana. Just 2 runs coming from that over. The previous one had gone for 9, and the one before that had gone for 11. So they were kind of getting some kind of momentum. 20 runs in the last 2 overs. But this over from Udana has kind of put the shutters back on the scoring. Final delivery of the 5th over. Isuru Udana coming from over the wicket to Chris Lynn. And it's a Yorker length around middle and leg. Push back to the bowler. A dot ball. Just 2 runs on a wicket from that over. 34 for 2 are Jaffna Kings chasing 189 for victory. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches.
From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the... A little bit of harakiri happening out there with the Jaffna Kings. They already had a run out, and then we could have had another run out, and then we could have had another run out. So in the span of 7 balls, we could have actually had 3 run outs. And not surprisingly, Chris Lynn would have been involved in all of those 3 runouts. And it has got to do with the calling. There has been a little bit of an issue with the calling, maybe some network issue or whatever. But they need to sort it out soon. And they need to figure out what is the best way to communicate down the leg side from Mujibur Rahman. Again, a communication issue. Now, this is something which Chris Lynn has to stop. He just runs off for the single, thinking that there is a single on offer. But he needs to understand one thing, that a run is counted only if 2 people run together. Well, if only one person is running, it will only result in a run out. 37 for 2, then 152 needed from 87. Now that will help. Down the leg side, and the keeper was blinded. Lynn went for the sweep, but missed it totally, and the wicket keeper was totally blinded. And it's welcome runs for the Jaffna Kings, and the wicketkeeper is Dinesh Chandimal, I believe. Yes, Dinesh Chandimal is the wicketkeeper. Can't blame him because he's standing outside the off stump for Mujibur Rahman, and he's fired it down the leg side. And what has happened to Isuru Udana? Well, he is gone outside the boundary line, trying to stop the ball from reaching the boundary, and now he's exercising his calf muscle. While running, he has pulled his calf muscle. And well, beloved Kandy are going to have to deal with this blow. This is a big blow if Isuru Udana is not going to be able to complete his overs in this contest, and if Kandy go through about in the next contest as well, because he's a very critical player for them. He strikes with the new ball, he strikes with the old ball, and he can come and score a few runs with the bat as well. Short delivery, carom ball outside the off stump, punched back to the bowler. Well, Lynn and Mujib play for the same team in the Big Bash. Both play for the Brisbane Heat. I mean, this was still last year. So again, that same thing. Both will be knowing each other. And what a shot! What a shot from Chris Lynn. You don't expect this from Lynn to actually just time the ball, because he bashes the ball. It was outside the off stump, very full, and he just drove and he just pushed it. And Asif Ali at mid-off dived to his right and tried to stop the ball, but in vain. And since this is a power play, there is no one manning the long off region. And Asif Ali was clearly late. He was never given close to the ball, and the ball just raced away to the fence for a boundary. 46 for 2, final delivery of the power play, and it is a carom ball around the off stump. It is punched down towards long on. So 13 runs from the final over of the power play. The Jaffna Kings end the power play at 47 for 2, where the Beal of Kandy were 58 for 1 at this stage. At this point in time, well, we have to say that the Beal of Kandy are slightly ahead as compared to their opponents. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app.
Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. How difficult for an umpire is to have zero markings on his face after you know that either the ball is hit the pad and it's going to hit the stumps, and either it is going to hit not hit the stumps, or it has hit some part of the bat, gloves or anything else, but you cannot show whatever expressions. Now he is magical. He is always magical, Hasaranga, and he gets a wicket here. In his first over on the third ball, it's a wicket going down, and yes, it is the fall of a wicket which was required. Beautiful, and I think this is a kind of a plot which is built for Hasaranga to come and exploit all the possibilities. And on the other screen, I think I have a different league going on, and just because I see the graphs being intersected by the worms, and now it is going away as Dunit Vellalage departs, caught by coming to Mendes of the bowling of the one and only. What can we expect more, because it is always on the cards when he comes to bowl Wanindu Hasaranga, and it is always that magical delivery that he gets, because he always produces that breakthrough which are badly required. Why I stress on always? Because he has never left any stones unthrown back to the opponent. And what this means, that he is a very difficult customer to get away from. 48 for 3, disturbing can be the score that reads, but settled can be the conditions if a 41 years young fellow, Shoaib Malik, immense talent, huge caliber, cadre, talk about his temperament, his skill set, all at the highest range, and he'll be expected to get some very wealthy runs in quick time for his team, as he has Chris Lean to support him. But nevertheless, it is a situation which would have not been expected by the Jaffna Kings when they're chasing 189. You talked about how conditions will be difficult. Now he's straight away celebrating. Yes, straight on the pads. On the delivery, which was straightened, he tried to play across the line in the previous over to another spinner. But here, he is a different customer altogether. Hasaranga, he'll not give you time to just play your own shots. You cannot be napping against him, and you're caught. You are caught plumb. I think it is plumb, and I think the review will be wasted here. Yes, Karthik, your call on that? Yeah, it does seem that the review is going to be wasted, because all that Hasaranga needs is an umpire's call at the most. I feel this is going to crash into leg stump, but don't see that spinning down the leg side. At the most, it's clipping leg stump, and well, the ball has turned. There's no doubt about it. It has turned, but don't think that it is going to spin down the leg side. At the most, it may clip the outer half of leg stump at the most. But because the umpire has already given it out, umpire Alim Dar, I think, was there a murmur? Was there a murmur when the ball just goes past the bat?
There is a slight murmur. No, but that's not a deflection. That's just, I think, something on the ultra edge, maybe of the air or something. So no inside edge there. Now, is this hitting? Is this missing? Is this clipping? It is clipping. Well, that will do for Hasaranga because the outer half of the ball is hitting the leg stump, and if the umpire has given it out, then it will stay that way. Umpire's call, and well, are the Jaffna Kings imploding because now they have lost 3 quick wickets, and they were 32 for 1. They were 32 for 1 and they are now slipped down to 49 for 4 in the span of 16 balls. 16 balls, 17 runs, and well, 3 wickets down. Chris Lynn goes as well, getting across and trying to sweep, but missing it completely. And well, Wanindu Hasaranga has got those bells going, his celebration, and now it's down to the last recognized batting pair for the Jaffna Kings. Why am I saying the last recognized batting pair? Because after that, it's kind of the all-rounders and sloggers like Thisara Perera and Asela Gunaratne. They have the batting lineup: Shoaib Malik, David Miller, Thisara Perera, Asela Gunaratne. But you have to believe that if this 5th wicket partnership is broken quickly, then Kandy will run through the Jaffna Kings. And that's how it has been throughout this tournament. Their batting has struggled. Primarily, the top order has been blown apart. And apart from Shoaib Malik, no one has quite stood up for them in this challenge. Now the leg spinner from around the wicket from well outside the off stump. Miller gets across to sweep, but misses, and is hit on the pads. No appeal because the impact was well outside the off stump. And the Kandy fans want that to be reviewed as well. Well, dear Kandy fans, if you really love your team, well, please do not take that for a review, because there is nothing to be given out if it's going to hit the 4th, 5th or 6th stump outside those sticks. 7 gone, 49 for 4 are the Jaffna Kings, chasing a mammoth 189 for a place in qualifier 2. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches.
From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game changer. जब आप 179 का पीछा कर रहे हैं, 53 पर 4 जब आप देखते हैं, तो आप क्या सोचेंगे? आप क्या सोचेंगे कि यहां से कहां लेकर जाएं अपनी टीम की नैया? क्योंकि यहां पर हसरंगा जैसे बोलर्स का आपको सामना करना है। यहां पर 2 रनों का इजाफा, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। यहां पर अभी शोएब मलिक को भी पता है कि डेविड मिलर बहुत ही तेज तर्रार है, और शोएब मलिक बिल्कुल 41 पर सिर्फ उनका वो जन्म साल का आंकड़ा पहुंचा है, वो नहीं पहुंचे, वो कहीं 26-27 पर अटक गए। क्योंकि आप देखेंगे उसका दमखम, एक दूसरी मैच हम देख रहे थे जहां पर शोएब मलिक ने अच्छी बल्लेबाजी की थी अपनी टीम को, हालांकि वो पार नहीं करा पाए थे उस लाइन पर, लेकिन शोएब मलिक का दमखम आप उनसे छीन नहीं सकते। क्या है, आप वो कहते हैं ना कि एक शेर को आपको शिकार करना सिखाना नहीं पड़ता, वो हमेशा उस हालत में ही रहता है जहां पर वो शिकार कर लेगा। यहां पर डेविड मिलर जैसे एक होनहार बल्लेबाज को एक स्वीप खेलकर सिंगल लेना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े शॉट्स तो लगाना चाहेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि इसके बाद तीसरा भरेगा है। किसी को भी आप ऊंच नीच नहीं आंकेंगे, लेकिन आपको यही सोचना होगा हमेशा कि नहीं, मुझे रहना होगा आखिर तक, मुझे रहना होगा आखिर तक, और वो रन बनाने होंगे। अगर आपको कहीं पास भी जाना है 189 के, तो इन दोनों को, शोएब मलिक और डेविड मिलर को, वो एक बहुत ही अच्छी साझेदारी करनी होगी। क्योंकि अब तकरीबन 11 गेंदें ही बची हैं 10 ओवर के उस अंतराल को, हम उस पड़ाव को छूने के लिए। वहां पर अगर आप सोच रहे हैं 8.5 ओवर में 57 रन है, 4 विकेट है। हसरंगा जो स्पीड वेरी करने में माहिर है, एक फुलर डिलीवरी बिल्कुल ब्लॉक होल में थी और लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है। 1 रन के साथ समाप्त करेंगे 9वीं ओवर 58 पर 131 रन चाहिए 66 गेंदों में, और घड़ी को हाथ लगाया, मतलब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 2 मिनट 30 सेकंड का।
स्वागत है आपका शेहान अरचिगे, और स्वागत है आपका स्पोर्टर 143961। आपका नाम अगर पता चल जाए तो थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि थोड़ा अजीब लग रहा है आपको इस नाम से पुकारने में। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू आवर ऐप। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई सवाल है, तो प्लीज जरूर अपने सवाल जो है लिख भेजिएगा इस चैट सेक्शन में। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये मैच एंटरटेनिंग लग रहा हो, एटलीस्ट हमारी कमेंट्री से आपको थोड़ी बहुत राहत मिल रही हो, जो भी हो, या फिर अच्छा नहीं लग रहा हो तो जरूर लिख भेजिएगा इस चैट सेक्शन में कि किस तरह से हम आपकी सेवा बेहतर कर सकते हैं और आपकी क्या राय है। क्या कौन सी टीम बेहतर है? क्या आपको लगता है जाफना किंग्स यहाँ से मैच जीत पाएगी, या फिर जैसे जिस तरह से अभी फिलहाल स्कोर बोर्ड लग रहा है उस हिसाब से तो टाइट है पीसी लग रही है जाफना किंग्स की हालत फिलहाल, या फिर आप वैसे एक ऐसे क्रिकेट समर्थक है जो ये समझते हैं कि जब तक वो जो आखिरी गेंद नहीं डाली जाती है तब तक जो है हार या जीत का फैसला नहीं होता है। आपको जो कहना है आप बिल्कुल कह सकते हैं। फिलहाल शोएब मलिक यहाँ पर बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी गेंद अरच्ची के द्वारा पीछे गए शोएब मलिक और इसे पुल कर दिया डीप स्क्वायर लेग के दिशा में 4 रनों के लिए। तो ये यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ब्रेक के बाद एक मोमेंटम शिफ्ट थोड़ा बहुत आता हुआ, क्योंकि पहली गेंद पर डेविड मिलर ने लॉन्ग ऑफ को पार किया और चौथी गेंद पर शोएब मलिक ने एक चौका लगाया है। तो 11 रन इस ओवर में अभी तक आते हुए। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो रिक्वायर्ड रन रेट 12 के आसपास है। तो क्या यहाँ पर अटैक जो है शुरू हो चुका है और ये अपने बॉलर्स पिक करेंगे, क्योंकि मुजीबुर रहमान का 1 ओवर बाकी है, वनिंदु हसरंगा के 2 ओवर बाकी है। तो ये 3 ओवर शायद जाफना के खिलाड़ी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी 3 बॉलर है, याद रखेगा इसरू उडाना फील्ड में है कि नहीं ये हमें पता नहीं है। हमने उन्हें चलते हुए तो देखा था, लेकिन बाउंड्री के बाहर क्या वो वापस आ गए हैं या नहीं ये पता नहीं। तो अगर जब तक वो वापस नहीं आते तो उनके बॉलिंग का स्लॉट भी खाली रहेगा। तो या तो उनका ओवर जो है एंजेलो मैथ्यूज को करना पड़ेगा या तो फिर किसी और को। इसका अर्थ है कि छठा बॉलर भी यहाँ पर यूज होने वाला है, और वो छठा बॉलर होने वाले हैं नुवन प्रदीप। तो ये ऐसे बॉलर्स को टारगेट करेंगे कि हम कुछ बॉलर्स को अटैक नहीं कर सकते, लेकिन जिन बॉलर्स को अटैक कर सकते हैं उनके बॉलिंग में बहुत ज्यादा रन्स हम स्कोर करेंगे। जैसे कि इस वाले ओवर में 13 रन आते हुए इस 10वें ओवर में जाफना किंग्स 71 4 विकेट के नुकसान पर, और फिर उन्हें जरूरत है 118 रन की 10 ओवरों में। Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Talking about the 6th bowler, and he's come Nuwan Pradeep, and this is going to be a chase which every cricket enthusiast will have to cherish, because n number of times we have seen David Miller turn tables from here in this situation. It is for David Miller. How would you explain the situation? It's only 117 to get in 59 deliveries. If he goes berserk, he'll transfer that energy to Shoaib Malik as well. No, with that correction to Shoaib to David Miller, it's only one thing every time. If the ball is in the arc, it has to go out of the park. But he's so clever for a cricketer. You know, he just makes sure that if he is not into runs, he'll make sure that a partner who is into runs gets most of the strike. And in this case, both of them are near about on the same verge. You know, 14 of 13 deliveries to David Miller, 9 deliveries for 11 runs to Shoaib Malik. Now, why do we say that David Miller can be dangerous? Because he has proved his mettle at the highest level.
for his national team and whatever team he plays in other leagues. And here is a tailor-made situation for him. Most wickets, who else? The man with the ringing bells, Wanindu Hasaranga, and in that list it is number 4 is Nuwan Pradeep, who's come to bowl his first over in the 11th over of this innings, 74 for 4, and he's asking, what are you doing, man? As if Sachin Tendulkar was asked by Yusuf Yuhana when he was playing against Devashish Mohanty. He asked, Sachin Paji, ये क्या करता है देवाशीष, समझ में नहीं आता. तो what he answered back to Yusuf Yuhana, अब बहुत जल्दी पूछ रहे हो, सईद अनवर को 2 साल लगे ये सोचने को क्या करता है देवाशीष मोहंती. हम भी कभी कभी फिगर नहीं कर पाते क्योंकि वो ऐसे एक एक्शन में आ जाता है और वो कर देता है. तो दिस इज व्हाट ही आस्किंग, व्हाट आर यू गोइंग टू बॉल द नेक्स्ट बॉल. सो लाइक there's a funny banter going on in this match. In the first innings also we saw that when players came on in the first match also we saw it was a funny banter, taking that fielding position as per the batter's will. So it's good to see, you know, there is where the statement that I love the most on commentary is, no matter who wins, cricket is the ultimate winner. So here a boundary towards the mid-wicket region in the deep. There was no fielders in that position, and Nuwan Pradeep going for runs in the first over itself. 7 runs off the first 5 deliveries with 3 singles, 1 dot, and a boundary towards the leg side. And Shoaib Malik, you know, if he gets that liberty from the bowlers of hitting those balls towards the boundary line, he'll make sure that he will. And you know what, by this situation, I'll tell you what I feel every time I see all these gestures from the dugout or from the coaching staff or the supporting staff. Everyone except for those 13 players on the field know how to play cricket. Everyone. This is the most interesting statement I've ever learned. So 11 overs done, and with that boundary it is 82 for 4 and 107 required of 54 now. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the... Magnificent! पहले तो उनकी बैटिंग और अब उनकी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग मोहम्मद हरीस द्वारा. खराब गेंद मुजीबुर रहमान की छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, डेविड मिलर ने उसे पंच किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में और मोहम्मद हरीस ने बहुत ही तेज तरार वहां पर दौड़ लगाई, रनिंग रेस लगाई और पहुंचे लॉन्ग ऑफ से लेकर डीप एक्स्ट्रा कवर तक, छलांग लगाई और बाउंड्री रोक दी. 2 रन ही बचाए उन्होंने, लेकिन वो 2 रन उनके टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे ये सिर्फ वक्त ही बताएगा. और दूसरी बात यह है कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आपको अपना 100%, 100% देना है और वही फिलॉसफी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं मोहम्मद हरीस. फिलहाल 85 4 विकेट के नुकसान पर छोटी गेंद एक बार फिर से उसे पुश कर दिया डीप मिड विकेट की तरफ. एक ही रन लेंगे. तो जैसे हमें शक था, ये जो 3 ओवर हैं मुजीबुर रहमान और वनिंदु हसरंगा के मिला के, उनमें शायद ये दोनों खिलाड़ी 15 और 20 रन के बीच में लेने की कोशिश करेंगे. क्रिटिकली वो अपना विकेट नहीं गवाएं, इस पे ही ध्यान देंगे. बिल्कुल. और इस गेंद पर हवाई अटैक कर दिया है. उनको पता है कि आखिरी 2 गेंदें ये बची हैं, 3 गेंदें बची थी और इस चौथी गेंद पर लगा दिया एक करारा छक्का. बहुत ही बढ़िया था ये शॉट, लेग साइड के ऊपर काफी. और जैसे कह रहे थे ना कि मेरे अगर आंख में है तो मैं नहीं छोड़ने वाला, ये कहते हैं हमेशा डेविड मिलर और करके भी दिखाते हैं. ब्यूटीफुली प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड था. ये रेंज में आई, ये पकड़ में आ गई गेंद और उन्होंने जहां पर डालना था वही डाल दिया. लॉन्ग ऑन वाइडिश डीप मिड विकेट के ऊपर ये छक्का खेल दिया है.
बेहतरीन, ये इनका जो बॉटम हैंड है ना, ये इतना मजबूत है डेविड मिलर का कि आए दिन वो आपको किसी भी दिशा में वो बिल्कुल स्टैंड्स में पहुंचा सकते हैं। कहीं पे डालिए, आप कहीं पे डालिए, कौन से भी स्टंप्स के ऊपर लाइन, आपकी लेंथ कुछ भी हो, अगर उनके दायरे में, अगर उन्होंने ठान लिया है कि इस गेंद पर मारना है तो वो कैसे भी मारेंगे। और यहाँ पर एक वाइड डाली, उसके बाद तुरंत वो कहने लगे कि नहीं, एक वाइड से दिल नहीं भरता, मैं और 5 डालूंगा। तो ये वापस वो याद दिला रहा है एक ओवर जो खत्म ही नहीं हो रही थी पहले मैच में, वाइड के ऊपर वाइड डाल रहे थे, वाइड के ऊपर वाइड डाल रहे थे, और कोचिंग स्टाफ जो है यहाँ पर सब चीजें पटकता हुआ, शायद बाद में जब उनका गुस्सा सहम जाए तो उन्हें पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें टूट चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर आपको खेलने देना चाहिए, बार बार आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपको एक्सप्रेस करते हुए आपके बल्लेबाजों ने देख लिया या फिर आपके गेंदबाजों ने देख लिया तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूं तो क्या मैं गलत कर रहा हूं, तो मैं अगर कुछ प्रयास कर रहा हूं कुछ अलग करने की, और उसमें अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, और अगर मैं मैच में नहीं प्रयास करूंगा तो कहां करूंगा, नेट्स में नहीं होता। तो ये 2 रन यहाँ पर इजाफा हो चुका है डीप का पॉइंट पर, और यहाँ पर एक कट करने की कोशिश फिर एक बार मिस हो गए। 12 ओवर के बाद 100 पे 89 रनों की जरूरत है अब 48 गेंदों में। Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches, from international showdowns to 66 गेंदों में 131 रनों की आवश्यकता थी जब स्ट्रेटेजिक ब्रेक लिया गया था, और उसके बाद इक्वेशन है 48 गेंदों में, यानी पिछले 3 ओवर में 42 रन आए हैं, और जिसमें से पिछले ओवर में 18 रन आए थे। तो पूरी तरह से यहाँ पर मोमेंटम जो है, और मोमेंटम की बात करें तो एक बार फिर से वाविंदु नहीं है, वाविंदु ही है। बेहतरीन गेंद वरिंदु हसरंगा की, एक लेग स्पिनर ऑफ स्टंप के बाहर, डेविड मिलर ने उसे स्लॉग स्वीप करने का प्रयास किया, लेकिन काफी दूर थे वो गेंद से, जिसके कारण गेंद अंदर घूमी, बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और बैंग स्टंप्स पर गेंद, और लेग स्टंप पर छू गई गेंद, और डेविड मिलर की पारी यहां पर समाप्त होती हुई, और ये 5वें विकेट का पतन यहां पर होता हुआ, ये साझेदारी जो थोड़ी बहुत खतरनाक लग रही थी व्हील ऑफ कैंडी के लिए, उसे तोड़ दी गई है। 52 रनों की साझेदारी तोड़ दी गई है। ये 52 रनों की साझेदारी ने वक्त लिया सिर्फ 33 गेंदों का। डेविड मिलर बोल्ड हसरंगा 26 रन 20 गेंदों में अच्छे लग रहे थे, पर जैसे ही वो थोड़ा काउंटर अटैकिंग करने का प्रयास कर रहे थे उन्होंने अपना विकेट गवा दिया। लेकिन ये पिछले कुछ ओवर ने इस मैच को एक ऐसे राह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पर पॉसिबिलिटी तो है जाफना के जीतने की, लेकिन विकेट्स बहुत ही कम बचे हैं। अभी 5 ही विकेट्स बचे हैं। अगर हम इस स्टेज पर व्हील ऑफ कैंडी की बात करें तो उनका स्कोर था 109 3 विकेट के नुकसान पर। तो रनों के हिसाब से तो जाफना ने कैंडी का पीछा करते करते ऑलमोस्ट लेवल तक आ गए हैं, पर विकेट्स का क्या करें। इस स्टेज पर कैंडी ने सिर्फ 3 ही विकेट खोए थे, जाफना ने 5 विकेट खो दिए, और अब आ गए हैं एक बंदे जिन्होंने अपने गेंद के साथ प्रभावित तो किया आज, पर क्या बल्ले के साथ वो कर पाएंगे। असेला गुणरत्ने 46 गेंदों में 88 रनों की आवश्यकता, और ये रन रेट जो है ना एक अजीब गणित फॉलो करता है। जब रिक्वायर्ड रन रेट 8 के नीचे होता है तब ऐसे लगता है कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, और वो थोड़े बहुत डॉट बॉल्स भी हो गए तो कोई परवाह नहीं। लेकिन जैसे 9 के ऊपर चली जाती है रिक्वायर्ड रन रेट, तो वो जल्द से जल्द ना ऊपर चली जाती है। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 कैसे बढ़ जाते हैं वैसे पता ही नहीं चलता। तो फिलहाल ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड रन रेट 12 के आसपास हो गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बॉल पे 2 या 2 से ज्यादा रन की जरूरत है। लेग स्पिनर असेला गुणरत्ने को उसे वॉचफुली डिफेंड कर दिया। ऑफ साइड पर रन लेने का कोई भी
वहां पर मौका नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर वनिंदु हसरंगा की। मैं डेविड मिलर को ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि एक ऐसा स्टेज आ गया था जहां पर वो एक काउंटर अटैक कर ही रहे थे। पिछले 3 ओवर में 42 रन आ गए थे और इसी बीच यहाँ पर एलबीडब्ल्यू अपील और अंपायर अलीमदार उसे आउट दिया है। पर शायद असेला गुणरत्ने इसे रिव्यू करेंगे क्योंकि शायद इंपैक्ट जो है ऑफ स्टंप के बाहर था। वे जरूर बात तो कर रहे हैं शोएब मलिक के साथ और सच में अगर आपके पास 2 रिव्यूज है तो आपको रिव्यू लेना चाहिए और असेला गुणरत्ने ने रिव्यू ले तो लिया है। बात सिर्फ इंपैक्ट की है क्योंकि गूगली थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, छोटी लेंथ की थी और इसे पुल करने का प्रयास किया। असेला गुणरत्ने ने पूरी तरह से चूक गए और गेंद बैक पैड पे लगी। यहाँ पर एक ही चीज उन्हें बचा सकती है और वो है इंपैक्ट, क्योंकि पुल करने के प्रयास में वो ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे और कभी कभी वो अगर आप ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर आ जाते हैं तो इंपैक्ट जो है आपको बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर अंपायर्स कॉल भी अगर हुआ इंपैक्ट तो भी यहाँ पर टच एंड गो है, तो बहुत ही टच एंड गो है। शायद इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ नहीं है क्योंकि गेंद अंदर आई है और उन्हें लगी है या तो ये अंपायर्स कॉल या तो ऑफ स्टंप के वहां पर इंपैक्ट है। लग तो रही है स्टंप्स पर और जाफना के कोच तिलना कंदम भी बहुत ही निराश नजर आ रहे हैं। शायद उन्होंने वो कहते ना इंग्लिश में एक राइस स्माइल उन्होंने दे दिया। शायद उन्हें पता है कि ये शायद आउट ही होगा और मुझे तो सिर्फ वो इंपैक्ट का ही थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या इंपैक्ट इन लाइन है या इंपैक्ट ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर है। और यहाँ पर जो ऐसा लग रहा है कि शायद अंपायर्स कॉल हो सकता है, शायद आउट भी हो सकता है। वैसे अंपायर स्वप्न ने तो यहाँ पर आउट दे दिया है। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी क्या कहती है। अरे टेक्नोलॉजी ने तो अग्री कर ही दी क्योंकि इंपैक्ट अंपायर्स कॉल नहीं है, इंपैक्ट इन लाइन है और मिडिल स्टंप। और हाँ ये आप कह रहे थे ऑफ स्टंप पर शायद जाके लगेगी, लेकिन इम्पैक्ट लेकिन वो इतना डीप हुआ, वो इतना घूमा, वो बिल्कुल वो ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई बॉल की और पकड़े गए। आप पकड़े गए 101 पर 6 हैं। शायद जैसे हिस्ट्री रिपीट नहीं करेगी अपने आप को। अब एक और कदम नीचे उतरे हैं, 101 पर 6 हैं। तिसिरा परेरा आए हैं अब नए बल्लेबाज, लेकिन बहुत कम गेंदें बची हैं। अब डबल द बॉल्स ऐसी चाहिए। 44 गेंदों में आपको 88 रनों की जरूरत है। यहाँ पर 0 रन बनाकर जा रहे हैं असेला गुणरत्ने। अब अच्छे खासे गेंदबाज साबित हुए थे पहली पारी में, लेकिन कार्तिक यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि हमने प्रॉमिस किया था हमारे प्रेक्षकों से कि हम जब दूसरी मैच करने आएंगे जाफना और कैंडी के बीच में, हम वनिंदु हसरंगा के बारे में बात करेंगे। और उन्होंने जो निर्णय लिया है संन्यास लेने का टेस्ट क्रिकेट से, किस हद तक आप सहमत हैं उससे। और इतना एक प्रतिभावान जो खिलाड़ी होता है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी होता है, वो जब संन्यास की बात अपने 26वें साल, मतलब वर्ष कितने हुए उनकी, 26 है आयु उनकी, और उनके इस आयु में वो अगर खुद को संन्यास लेने के काबिल समझते हैं तो आपने मतलब क्या हासिल किया है, आप क्या सोचकर ये कदम उठा रहे हैं, आपने फिर ये गेम आप कैसे रीड करते हो? पैसा, ये पैसा, पैसा, ये पैसा 3 पैसा, ये पैसा 4 पैसा, ये पैसा 5 पैसा, मुसीबत हो ना हो मुसीबत। तो बस वैसे मैं लिरिक्स बराबर नहीं इस्तेमाल करने के लिए माफी चाहूंगा, बट हाँ ये एक सिंपल सी बात है। आजकल मैं अपने आप को बूढ़ा तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये जो युवा पीढ़ी है उन्हें ऐसे लगता है कि क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ वाइट गेंद में ही, वाइट बॉल क्रिकेट में ही है। और इसी बीच यहाँ पर बेहतरीन गेंद, 2 अच्छी गेंदें तिसारा परेरा को। पहले तो एक लेग स्पिनर थी जो अंदर आई, तिसारा परेरा के पैड्स पे लगी, लेकिन इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ था। और उसके बाद जो है गुगली डाली, ड्रिफ्ट हुई अंदर और फिर बाहर की तरफ स्पिन हुई और तिसारा परेरा ने उसे खेलने का प्रयास किया पर पूरी तरह से चूक गए। तो 13 ओवर के बाद 101 6 विकेट के नुकसान पर। और वनिंदु हसरंगा की खासियत आज के इस मैच में, उन्होंने 4 विकेटें ली और दोनों बार एक ही ओवर में 2-2 विकेट उन्होंने वैसे हासिल किए। 3 ओवर में 9 रन। तो ये एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है कि वनिंदु हसरंगा, अब ये अलग बात है कि क्या वनिंदु हसरंगा टेस्ट क्रिकेट में एक बेहतर गेंदबाज हो सकते थे, नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले और 4 टेस्ट मैच खेलने के बाद ही उन्होंने सीधा सीधा यही कहा कि मुझे सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट ही खेलना है, मैं उसके लिए अच्छा हूं नहीं हूं वो अलग बात है। और इसी बीच
भारत के जमाई राजा ने कदमों का इस्तेमाल किया है और लॉफ्ट कर दिया डीप मिड विकेट के ऊपर 6 रनों के लिए। अरच्छिके आए हैं राइट आर्म राउंड द विकेट से और गेंद पैड्स पर डाली और शोएब मलिक ने उसे उठाकर खेल दिया डीप मिड विकेट के ऊपर 6 रनों के लिए। 41 गेंदों में 82 रनों की आवश्यकता। तो जी ये सुनकर थोड़ा ऐसे बुरा लगता है। कल आप इमेजिन कीजिए जसप्रीत बुमराह अगर कहेंगे कि मुझे सिर्फ T20 या ओडीआई ही खेलना है, मुझे टेस्ट नहीं खेलना है। और प्रॉब्लम यह है ना कि कोई ये नहीं सोचता कि मैं टेस्ट में अच्छा, चलो अगर आप कहते हैं कि आपकी बॉडी में वो, अगर कल बेन स्टोक्स कहते हैं कि मैं टेस्ट नहीं खेलना चाहता, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उनकी बॉडी जो है ना वो असेंबल्ड पीसी की तरह होती है, ऐसे असेंबल्ड पीसी की तरह है। कभी एक पुर्जा टूटा हुआ है, वो पुर्जा टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, तो उनकी बॉडी फिट है क्या वो पता नहीं। सिमिलरली हार्दिक पांड्या, अगर ऐसे खिलाड़ी ना बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वनिंदो हसरंगा 26 वर्ष के खिलाड़ी और इन्होंने अभी तय कर लिया कि इनको अगर अगले 10-15 साल खेलने हैं क्रिकेट में तो वो व्हाइट बॉल क्रिकेट ही होने वाली है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली उन्हें सिर्फ कांट से, बट ये पैसे की ही बात है, जहां पर आप हर कंट्री में जाके अपने टैलेंट को यूज करना चाहते हैं, जहां पे आप हर लीग में खेलना चाहते हैं। और चलिए इस लीग से तो तिसारा परेरा बाहर होते दिख रहे हैं। अच्छी गेंद अरच्छिके की ऑफ स्टंप पर थी गेंद और बाहर की तरफ गई। तिसारा परेरा पीछे गए और कट करने का प्रयास किया, लेकिन परेरा के नाम में जो तीसरा है बिल्कुल वही तीसरा स्टंप जो है पर गेंद लगी, यानी ऑफ स्टंप पर, और बॉल बाहर की तरफ निकल गई। और एक्चुअली ये जो है परेरा मिसेस द कट, इस बॉल पे नहीं, शायद परेरा मिसेस द कट टू द फाइनल होने वाली है, क्योंकि अब जो है 7 विकेट गिर गए हैं। और वैसे तो करने के लिए तो कर ही सकते हैं, मैथमेटिक्स में तो कुछ भी पॉसिबल है। 81 रन्स चाहिए, कितने 38 गेंदों में, पॉसिबल तो है बट इट्स लुकिंग मोर ऑन द वर्ज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। तिसारा परेरा आउट होकर वापस जा रहे हैं 108, 7 विकेट के नुकसान पर। अब जाफना किंग्स बहुत ही खराब स्थिति में और नए बल्लेबाज आते हुए मैदान में, शायद कौन है ये, शायद महेश तीक्ष्णा ही है, हमें पता चल जाएगा। तो वनिंदो हसरंगा की मैं बात कर रहा था, ऐसे बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं जो ये सोचते हैं। अभी हाल ही में इंग्लैंड में एक क्रिकेटर है विल स्मीड, उन्होंने मना कर दिया है अपने काउंटी के लिए रेड बॉल क्रिकेट साइन करने के लिए, रेड बॉल काउंटी स्टेट, तो उन्हें सिर्फ व्हाइट बॉल चाहिए। तो अब ये जमाना ही ऐसा हो गया है जहां पर आपको T20 खेलना है, T10 खेलना है और 100 खेलना है। क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड पूरे विश्व में रहती है। आप इसके बाद लंका प्रीमियर लीग के बाद आप CPL में वेस्ट इंडीज में जा सकते हैं, वहां पे जाके करीबियन प्रीमियर लीग खेल सकते हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में प्रीमियर लीग खेल सकते हैं। उसके बाद दुबई में IL T20 खेल सकते हैं। फिर कनाडा में ग्लोबल T20 खेल सकते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेल सकते हैं। फिर बांग्लादेश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल सकते हैं। न्यूजीलैंड में खेल सकते हैं। आप सब जगह पे खेलते ही रह सकते हैं और आप जो है कंटिन्यूस जो आपको खेलना है वो खेलते रह सकते हो। इसीलिए ये जो खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है खास करके, वो रेड बॉल क्रिकेट से रिटायर कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग एंजेलो मैथ्यूज द्वारा, इंजरी से वापस आ रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने छलांग लगाकर उस गेंद को रोका है। और यहाँ पर सहान अरच्छिके जो ऑफ ब्रेक बोल रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस आएगी अगले मैच के पहले। चलिए मैं थोड़ा लिबर्टी ले रहा हूँ ये कहकर कि अगले मैच में कैंडी जरूर खेलेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच जो है ये जाफना के लिए खौफनाक बनते जा रहा है और खत्म होने के कगार पर ही है। अच्छी ऑफ ब्रेक ऑफ स्टंप के बाहर, तीक्ष्णा ने उसे वापस डिफेंड कर दिया 7 रन ओवर में आते हुए, लेकिन वो इसके लिए क्योंकि पहले गेंद पर एक छक्का जड़ा था और आखिरी 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन और 1 विकेट आया। 14 ओवर के बाद जाफना 108, 7 विकेट के नुकसान पर 189 का पीछा करते हुए। Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup
Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your... काफी दूर खड़ी है यहाँ से वो विक्ट्री लाइन और उनके बीच शोएब मलिक खड़े हैं बैटर और बीच में खड़े हैं वनिंदु हसरंगा द बॉलर। 4 विकेट लिए 9 रन देकर। कभी कभी तो मैं सोचता हूं उनके पास देख के वाइड बॉल अगर उनको दे दो 4 रन दे के वो 9 विकेट भी ले सकते हैं। इतनी अच्छी खासी करते हैं गेंदबाजी कभी कभी। और इसी बीच एक चौका लग गया है, यहाँ पे चौका लग गया है और थोड़ी सी एक खुशी की लहर दौड़ सकती है, लेकिन अनुमान प्रदीप जो 16 रन दे चुके हैं 1.3 ओवर में, यहाँ पर उनको लाइन एंड लेंथ का कुछ करना पड़ेगा अगर उनको ये मैच जल्दी समाप्त करनी है, क्योंकि एक ओवर से आपके कप्तान एकदम सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल डटे हैं और चाहते हैं कि वो जो किला है बड़ा वो गिर जाए और वो जीत हासिल करें। और एक तरफ अगर आपने आपके प्रतिस्पर्धी संघ को वो चांस दे दिया रन स्कोर करने का, तो थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि दूसरे की मेहनत पर पानी फेरना कैसे होता है, तो ये हो सकता है। लेकिन देखिए ना कितनी अच्छी बात है, आपका एक प्राइम बॉलर आपके साथ नहीं है, उसकी कमी नहीं खल रही है आपको, इसरो उड़ाना नहीं है, और वो अगर होंगे भी तो ओवर नहीं कर रहे हैं, डाल नहीं रहे हैं, गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसकी कमी खल नहीं रही है। इस ही बड़े एक क्या बोलते हैं उसको, आपने एक अच्छी खासी छोटी सी पहली जीत हासिल कर ली है। मैच का जो रुख है वो कभी भी यहाँ पर मतलब तय हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसी ही गेंदबाजी करते रहे तो शोएब मलिक भी शायद उनकी टीम को बाहर जाने से नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि बहुत मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा विलंब हो चुका है यहाँ पर। और 3 ओवर में 4 विकेट 9 रन देकर जो गेंदबाज अपने टीम के लिए कर सकता है, वो 1 ओवर में शायद 3 विकेट भी ले लें। मुझे लगता है कि 16वीं ओवर करने आएंगे और ट्राई करेंगे खुद को। 15 ओवर की समाप्ति 115 पर 7 है जाफना किंग्स। Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping T20 leagues, join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Exclusively on the Crickong app. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary, covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong app. Our podcast acts as your... And we were talking about who could be that bowler to replace Isuru Udana, and well, Angelo Matthews has to share that burden, for Isuru Udana, because now assuming that Kandy are going to go through, they would need Udana to take as much rest as possible. The match for the Eliminator is on the
18th, if I'm not wrong, not for the Eliminator, beg your pardon, for qualifier 2, if I'm not wrong. Or is it on the 19th? It's on the 19th, I guess. Yeah, it's on the 19th. That's on Friday, on Saturday, and then on Sunday they play the final. So it could be back-to-back matches for Isurudana if Kandy make it to the final, and hence they want them to have enough rest, as much rest as possible. And because today was a double header, maybe that's why tomorrow they are giving us a rest day. And well, as far as Manindo Hasaranga is concerned, he'll be very happy. He wouldn't mind that. Even if they had to play tomorrow, he would not have minded it because he is on the winning side at this point in time. But the players need to have adequate rest. Short ball down the track comes Mahesh Tikshana, pulls Angelo Matthews and finds the gap to the right of deep mid wicket, and it is a boundary. 120 now for the loss of 7, and this is such a scenario where we can't even say that try and play the 20 overs to try and better your net run rate, because even if you lose by 1 run, you're still out of the tournament. The winner who loses, the team which loses tonight gets out of the tournament. And it seems like Jaffna Kings are on that path for the moment. In the previous 3 years, they have won the final every single occasion. But probably tonight is the night where history is going to rewrite itself. Because once Jaffna go out, we are definitely confirmed of a new winner, a new trophy lifter this time. Will it be the beloved Kandy? Will it be the Dambulla Aura? I think Dambulla Aura looks as a firm favourites now to lift the trophy simply because of the way they played this afternoon. Or will it be the Gaul Titans? It could be one of the 3. But again, we would like to reserve our judgment till the Fat Lady has actually sung. Where has she sung? At the Sydney Opera or not? I don't know. But it's a saying in cricket. Where the match is not done till the Fat Lady has started to sing. And to put it in straightforward terms, I think the Fat Lady starts to sing if the runs required are more than 36 per over. That is, if you need 38 runs of the last over, of the required run rate goes above 36, that's when the Fat Lady starts to sing. 69 out of 25, robotically it is possible. On a PlayStation, it is definitely possible. But in real and practical scenario, I am not too sure whether it's possible or not. But having said that, I remember an ODI between Sri Lanka and Australia. In Australia, Sri Lanka were 8 down and they needed 100 runs at 6 runs per over. And this I'm talking about 2009. And it was Angelo Matthews and Lasith Malinga adding 98 runs for the 9th wicket, and eventually Sri Lanka winning. So we have seen difficult things happening in the past. But as of now, a little bit of things to ponder about as the batting side takes the strategic break. 121 for 7, 68. Actually, they're forced to take the strategic break given that 16 overs are done. But what can they do in the remaining 4 overs? Can they pull off a coup here, or at least get close to 180 and exit with a smile on their faces? We'll be back once the strategic break ends.
Wow, what a delivery! And wow, what a shot of that delivery. It was a straight one, almost a block all delivery, but he adjusted well. And Mahesh Tikshana just gets a boundary which would release some pressure, taking them closer to the target. But I don't think that one boundary after so many deliveries is enough to settle them for what can we say a good start towards the slog overs. 125 for 764 required in 23. Gettable. I'm not saying that it's not gettable. Always gettable. But looking at the scenario as they have ended up in a soup right now. 125 and the next half after hyphen says 7. So that 7 wickets will hurt their intentions. Shoaib Malik, I feel for this guy sometimes. He's always in a situation where everything is going against. He stands tall like a wall, but he is never supported. In one of the matches I saw him, I was not doing Lanka that time, but I was covering some other matches and I was just going into the other com box where I saw he was one of the last batters who was playing for the pride and not for the win. But always you feel for such batters because they give their heart and sweat, blood and sweat, and they bat heartily. But when you don't get that required momentum of victory, you always think that something has gone wrong for the team. And now it is the second injury scar that will be hovering around the red team, as Nuwan Pradeep is also down on the ground after I think he pulled up a back thigh muscle, that very delicate one, which is often due to the landing of the bowlers, and that can bring an issue. And it is 125 for 7, and he's up and ready to bowl the remaining 4 deliveries in the score. Now I don't understand this. What's the point in having Nuwan Pradeep bowl? Because let's accept it, 64 needed from 22. You can win with your non-regular bowlers also. And let us see at the bowling options. Angelo Matthews has 6 balls remaining. Vanindu Asaranga has 6 balls remaining. That's 12. Sahan Arachige has 6 balls remaining. That's 18. That means you need to have only 4 balls to be bowled by someone else. And don't you have that someone else in your team? Can't Fakhar Zaman bowl some leg spin? Can't Kamindu Mendes bowl? Can't Asif Ali bowl? Why? Why do you want to overstretch your bowler? Because remember, it is not about just winning tonight. You have a match 2 days later. Assuming, of course, that you are going to win tonight. Then why can't just Nuwan Pradeep go and rest just like Isuru Udana? Because the more he bowls now, he's just going to stretch that muscle even further, and that will worsen
his scenario, we can kind of applaud his bravery, but there is a thin line separating bravery and stupidity. 63 needed from 21 balls now down the leg side, and now he's down on the ground as well and bowls a no ball. And unless I am blind, I can see him struggling, I can see him limping, and I just don't understand this captaincy from Wanindu Hasaranga. Well, we can applaud the spirit of Nuwan Pradeep, no problem with that. Well, yes, lad, you have worked tremendously well, but if you ask me which is more important right now, I think that match against Gaul Titans on Saturday is more important for me right now, because if we apply practical sense, I don't see Jaffna Kings scoring 62 of 21 deliveries and make that 62 of 20 deliveries. And I certainly believe that you definitely have bowlers who can bowl those remaining 3 or 4 deliveries. And just to try and finish off this over so that you don't need to have the 6th or 7th bowler, it's a kind of absurdity from Wanindu Hasaranga. 62 of 20. Why is Wanindu Hasaranga refraining from bowling himself out? He should have bowled an over and tried to make an all out. He should have done that. And there's Shoaib Malik, but now, nevertheless, he has put my words back into my mouth because he's helped his team get the 8th wicket, and Shoaib Malik is out on 31, a well played 31, but nevertheless, it was not going to be enough for his team to get through to the W. 31 of 23 deliveries, 3 boundaries and a 6. An away going delivery, very, very away from the batter towards the wide guideline, but it was straight into the hands of Angelo Matthews, who does not drop many, and he's showing the ball to. And what is that happening there? Everybody is in their own universe, and it is just that grit that is enabling us to stay on ground. Otherwise, the scene which we are seeing in front of us are demanding us to go bonkers. Absolutely. And Nuwan Pradeep has something to laugh about for this particular game. He manages to get a wicket, 2.5 overs, 1 for 24. And, I'm sure that he's not going to bowl the 4th over for sure. But my worry is whether Nuwan Pradeep would be fit enough to play on Saturday, because the winner of this game meets the Gaul Titans in qualifier 2 on Saturday, and I don't think Nuwan Pradeep is going to be fit for that game. I genuinely hope I'm proved wrong in that case. But the last recognized batter, Shoaib Malik, is back in the dugout now for for the Jaffna Kings. Back of the hand, slower delivery from Nuwan Pradeep, way wide outside the off stump, and Shoaib Malik had already given the charge, which is why he had to reach out for that ball, miscuing it towards cover, where Angelo Matthews took a good leaping catch. Dilshan Madhushanka then is the last man. No, not the last man. It is the next man in at number 10. And once again, last 3 balls, including the free hit, Nuwan Pradeep has fallen down on the ground. And I genuinely hope that this is the last of him that we see on this ground tonight. Not because I hate him or anything, but because I just want him to recover in time for their next match against the Gaul Titans. And not because I support Kandy or anything, but just that we don't want to see an injured player just try and bowl unnecessarily in a cricket game where an opposition needs 62 from 18 deliveries. 3 overs, 1 for 24. And news from Dubai, not what was unexpected. New Zealand have defeated the UAE, but not comfortably, as we might assume. New Zealand made 155 for 6, and in reply, UAE, actually they fought well. They've fallen just 19 short, 136 all out, and Captain Tim Southee has taken a 5 for 4 overs. 4 overs, 5 for 25. But the points that New Zealand were looking for, their new generation, forget the new generation. Wicket number 9 has gone down now. 5 for Wanindu Hasaranga. No, it is a beautifully bowled leg spinner outside the off stump. Mahesh Deekshana came down the track, looked to go inside out, skewed it towards backward point, where Sahan Arachige dived forward and took the catch inches above the ground. Superb attempt. The fielding from Kandy has been brilliant, and it is a 5
for the man ringing the bell, and the qualifier 2 is not far away for B Love Kandy. 62 needed from 17 deliveries, just 1 wicket needed for B Love Kandy. Well, yes, just again going to the other match as well. The problem for UAE was only one person crossed 20, and that was Aryan Sharma, 60 from 43. Till he was playing, UAE had a chance, but after that the rest of the batting just imploded. Tim Saudi 4 overs 5 for 25. Now looking at what were New Zealand's expectations from this match and series, they wanted their new generation to score some runs, and unfortunately for them there weren't many. Tim Seifert scored 55. James Neesham scored 25. Now Cole McConkey, he's a new fellow, he scored 31 from 24. And as far as the bowling is concerned, well, there were plenty of question marks on the fitness of Kyle Jamieson. 2.4 overs, 1 for 20, not quite his best bowling figures. Ben Lister, not that great. Mitchell Santner, again, he's an experienced guy, he's not a newbie. Rachin Ravindra, 1 over, none for 8. So New Zealand have defeated UAE, but they have defeated UAE because their star cast has performed well. That their main players like Tim Seifert, James Neesham, and Tim Saudi and Mitchell Santner, these are the 4 strong people who have done well. And maybe from New Zealand's point of view, they will hope that their youngsters do well in the coming games. Well, back to the Hasaranga game again. They are still they are still checking whether the catch was legal, because after he took that catch, he put in a dive, he put in a slide, and from that angle, from one of the angles, it seemed like the ball had grazed the turf. But no, after seeing numerous replays, and what a joke, the third umpire is still yet to give his decision, but Nuwan Tushar is already in the middle, joining forces with his partner Dilshan Madhushanka. Yes, now the googly in the air, and has this gone all the way, or is this going to be taken? Taken! That is the end of the match then. It's a 6 for Wanindu Hasaranga. Well, before we end the podcast, you can put in your points. Why was he refraining from bowling the over that was bowled by Nuwan Pradeep? And, he would have not been injured, he would not been limping, and all these things would have been possible in that over also. But yes, to everybody's astonishment, 6 wickets to the Bella. And, he's just that fellow you can't hit even after he gets you, in a troubled situation. The blue team would be in a sad situation here, but, this is cricket and you have to be somewhere enjoying the game, not thinking much about the loss or the gain that you have got. All the experience that you worked for in this tournament will be a big, huge boost for your future aspects, and all the players will be departing from the blue team today will take some memories, good memories, and some good knocks, some good wicket hauls for them and for their team towards the end of this match. It is Hasaranga and company, along with all the experience that he's got, they emerge as the W holders, and they have to play one more level before they start thinking about all important final. Taking one by one step helps you a lot. Jaffna Kings were expected to chase 189, and it is Kristlin and Charit Asalanka who started the proceedings, but not a very favourable start for Asalanka. He got caught by Asif, and then for 1 run, Kristlin 19 runs, Ramanullah Gurbaz 19 runs. They got good starts but could not convert. Dunit Velalage only 3 runs to his kitty. Apart from Shoaib Malik and David Miller, 31 to Shoaib Malik, David Miller 26. No one else in that batting order showed that grit and intent of scoring for winning the match. It was Asela Gunaratne who was out on 0. Then it was Tisira Parira who was out on 0. So, and Mahesh Tikshana showed some grit with 15 again. But then it was Dushan Madhushanka who is not out on 0, and Nuwan Tushara got out on 0, ending the innings. And 13 extras, 11 wides, 1 no ball and 1 leg by to enhance that score. So if we remove 13, it is 114 on the board. And actually that 13 wides came because twice we saw 5 wides going across. And just a reminder of how that last wicket fell. It was a googly outside the off stump, and Nuwan Tushara went for a slog sweep, but skied it high in the air, and but was caught by
Lahiru Madhushankar. He's another Madhushankar. This is not Dilshan Madhushankar. He fumbled it in the first attempt, but took it cleanly in the second attempt. A sad batting display. In fact, a sad display overall by the Jaffna Kings in total. In terms of the bowling, well, do we need to talk further ahead of Wanindu Hasaranga 6 for 9? But this is a worry. This is a big worry for me. If we are talking from a future point of view, as Swapnil mentioned, they have got one more step. I look at this as a quarter-final. Now the next match is the semi-final, that is qualifier 2, because whoever wins that will make it to the final. Whoever loses is knocked out of the tournament. Is there any other bowler apart from Wanindu Hasaranga who can put pressure on the opposition? I don't know. If tomorrow Wanindu Hasaranga is not there, then this bowling attack is going to struggle, and this batting lineup also is going to struggle. Angelo Matthews, 3 overs, none for 23. Mujibur Rahman, not quite impressive today, 4 overs, 1 for 45. Isuru Udana, under an injury cloud. Will he be fit for Saturday? I'm not sure. 1 over, none for 2. Wanindu Hasaranga, 6 for 9. He continues his purple patch. Sahan Arachige, he was okay. 3 overs, 1 for 23, the off-break bowler. And Nuwan Pradeep, also under an injury cloud. 3 overs, 1 for 24. So come Saturday, they're going to have at least 2 players under an injury cloud. Isuru Udana and Nuwan Pradeep. Will they be fit for qualifier 2? Only time will tell. Talking about B Love Kandy's batting, their batting too could have been in trouble. They were 69 for 2 at one, 69 for 1 at one stage, and also in the 5th over, well, Mohammad Haris's stumping was missed by Rahmanullah Gurbaz when he was on 14. He ended up scoring 79, and Dinesh Chandimal scored 41. These two single-handedly, of course, these two scored 120, and then the remaining runs, if you look, Jaffna have scored only 7 more than these two combined, 120. There's not much contribution from any other player of the B Love Kandy, which shows that how difficult this pitch was to bat. And with the ball, Nuwan Tushara it was, who took a 4 for. Actually, he bowled a brilliant first over, and only his captain can say why he didn't give him that second over in the 3rd over itself and try and put B Love Kandy under pressure. So that's all from us from the Eliminator of the Lanka Premier League. It was a long day, a day which started at 3 p.m. Indian Standard Time and ended around 11 p.m. IST. We covered the double header, the last double header of the Lanka Premier League, because only 2 matches are left now. One is qualifier 2 between the Gaul Titans and the B Love Kandy, that will be played on Saturday 19th August 7:30 p.m. IST, and then on Sunday 20th August 7:30 will be the final where, of course, the Dambul Aura have already reached and will be awaiting the winner of the match between Kandy and the Gaul Titans. This is Karthik and Swapnil signing off. Hope you had a good, entertaining Thursday, because come Friday we'll return with more matches from all across the globe. We have Chandigarh, we have Karnataka, we have the ECS, and of course the India-Ireland series kicks off as well on 18th August. Plenty of cricket to look forward to, and we look forward to your company as well. You have been kind enough in gracing us for these matches today. Hopefully we will find the same grace come Friday and the days to come. Until next time, Karthik and Swapnil signing off. Ta-da, bye-bye, good night. Hey, bye-bye. Thank you for tuning in. This is your commentary team signing off. Catch you next time with more exciting live match.